Well Verge Podcast. Check it out. Well Pod's experience. All day, all night. Refine and redefine your life. Welcome. How are you, Josie? I'm doing good. So please tell me and tell the audience, tell Sir about what Sadhguru Sir has introduced in the app. You're from Isha Foundation, right? Yes. Yes, I'm please. a volunteer at Isha Foundation, an international non-profit organization dedicated to human well-being, founded by Sadhguru, a yogi, mystic and visionary. Sadhguru has designed powerful methods for self-transformation and empowerment through the science of yoga. Right. Sadhguru has launched Miracle of Mind meditation as a way to make meditation a part of your daily life. This is the name of the app, right? Yes, this is the name of the app and it's also the name of the meditation. Meditation. So, this meditation is also labeled as free forever. You can do it anywhere, it's always accessible to you. And if you have never meditated before, or if you have meditated before, still this works for you. This works. Can you please walk me through, like, what do you do? Is there a workshop or something, a small session? We have the app. Yeah. You can start, you can open it. Right. So, you don't have to do anything, you just download the app and you just press Let's Boom. And Let's there see you where go. it goes. Yeah. Yeah. So if you wish to receive the meditation in the best possible way, it will be best to sit in a cross-legged position. Right now we cannot sit in a cross-legged Of position. course. So what you can do is you can keep your right leg on your left leg and keep your palms facing upward on your thighs. Your right leg on your left leg. Like this Yeah, you can. Yeah, at the ankles you can Okay. just Oh, cross. okay. the- Ankles. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Sorry. It's like a semi-cross-leg posture. Semi-cross leg. Okay. Yeah. Now you keep your palms facing upward on your thighs. All right. So whenever you receive something you want to be open, Right. so this will keep you open. And you need not keep your spine erect. You can keep it comfortably erect. Your head need not be resting. Just chest erect, back straight, spine comfortably erect. Please close your eyes. Okay. Let's boom. Sit in a comfortable posture. If you wish, you can rest your back, but ensure your head is not rested. Place your palms upon your thighs, facing upward, with your face slightly upturned, eyes closed, and keep a mild focus between your eyebrows. Now inhale and exhale slowly, slightly deeper than normal. With each inhalation, you take this thought: I am not the body. The inhalation should last the whole duration of the thought. With each exhalation, take this thought: I am not even the mind. The exhalation should last the whole duration of that thought. Do this for a minimum of 7 minutes. If you wish to meditate longer, you can continue. At specific intervals of 7, 12, 15, 18, and 21 minutes, there shall be a bell to guide you with the timing. If you wish to continue meditating, you can ignore the bell and stay there as long as you wish. When you feel like opening your eyes, allow yourself 20 to 30 seconds, then slowly open your eyes. We will now go through this together. Please close your eyes. Keep your face slightly upturned and maintain a gentle focus between your eyebrows. With each inhalation, take this thought: I am not the body. With exhalation, I am not even the mind. I am not the body. I am not. Well Verge Podcast. Check it out. Well Pod's experience. How are you, sir? I'm very good. Thank you. First of all, a big salute to you for serving the nation, sir. Thank you very much. It's an honor that I'm here sitting next to you today. Honor is mine, yeah. Thank Yes. Sir, can you please guide us through in the audience about from where you started, the kind of upbringing you had, and the kind of things which were like a turning point in your life towards joining the NDA and becoming an IAF pilot? you. Okay. So, I was born and brought up in Delhi.
very normal middle class family, just like we all are sitting here. And so I was not a very good student in school in terms of academics. I mean, it was never my cup of tea. Not because of any problems, like people today use those fancy words, Right. dyslexic and Yes, ADHD. yes, Maybe yes. I had those Anxiety issues. or something, But yeah. back then there was no such words. Okay, there used to be only word nalayak and naughty. Naughty. Right. Right. So it was fine. ठीक है. But so most of my teachers, my relatives, and everyone in the families all had given up on me. And in fact, there were cases in school I remember where the principal used to, or the teachers used to warn that okay, he and his group of friends stay away from them. Were you a naughty child, like violence and stuff, or No, naughty not violent, naughty as such, Naughty. like all the kids are, because I was very energetic. Ah. So because of that, I was very good in sports. I had a very background of sports in my family was very good. So my mom was a national award winning athlete, 1982-83. Wow. Yeah, track and field. My grandfather was a wrestler in Pakistan, in Lahore, Lahore. before independence. That's impressive. So because of that, those genes were there, the energy levels were there. Right. Okay, but back then, for most families, putting kid directly into sports and thinking of a good career was not part of their thinking as Right. such. Right. But I was good in sports. I was very fine in sports. And another thing which a lot of people never knew about me was, so I hated academics Okay. to a great extent, but I Yeah. loved reading books. I was a very, very avid reader. Yeah. So I could read on multiple subjects, and there were times when I got into that zone or that flow, state of mind, where I was reading, and suddenly, it's like 2 or 3 hours passed just like this, Right. and I didn't come to know. Right. Right. So this was something which not a lot of people never knew about me. So because of my habit of reading and sports, combine these, then when I gave the exam for NDA, that helped me in cracking the exam. And Was there any specific dream, like of you, when you were a child, or something which attracted you towards Yes. NDA, Yes. becoming an so, IF? Yeah, so apart from sports and reading, so one thing I was very fascinated about was uniforms. Uniforms. Yeah, so always people in uniform attracted me, especially the defense forces. Right. So I was in for everything. I mean, for me, uniform was important, irrespective which service it was. Right. Army, Air Force, Navy was not important. Right. Uniform was important. But then I remember there was a very famous movie which came in the 80s. It was called Vijeta. Vijeta. That was the first ever movie. It was Rekha and Shashi Kapoor and his son. Right. That movie was first ever movie based on the Air Force life. It showed the National Defense Academy, the Air Force Academy, the flying, and also that was something which triggered me into joining the Air Force and taking the option for Air Force when I Right. was filling the form of UPS. Right. So that's how things happen. How difficult was it for you to not being a good person in academics and then cracking the ND exam? Did you have any kind of I would say doubts that okay, maybe I'm not good at academics, maybe I won't pass? So a lot of people will tell you a lot of false thing about this. Right. But the fact is that everybody is full of doubts in that particular age. But somebody like me, who was not good in academics, doubts were like 100 times. Why? Because not only that I doubted myself, it was everybody around doubted, and there was no social media, there was no motivational stuff going around, Right. telling you and all Right, those things. right. So you had to fight your way through. So you had to prove people that, okay, no, it is not that academics is everything, or I am bad in something, or it's your perception towards me. So when a lot of people gave up on me, and believe me, when I even was preparing for my NDA, not even my family knew what I was doing. I filled the form myself. My parents had no idea. They just knew that I'm filling forms. Yeah. But they had no idea what my passion was. Okay. And I prepared it for myself, the written exams and all. And when I cracked the written, then I just requested my mom that I want to join, a coaching for SSB, because I'm not from a Fauji background. Yes. So I need to study SSB. Right. So even my mom was reluctant whether you'll actually study or not, or you're interested. But I said, okay, you just pay the fees for this and forget it. You don't have to worry. Right. And then I started studying, preparing on my own. I myself went and gave the SSB, cleared the SSB, everything there. Then went for medicals and all. So by that time, of course, my parents were very, happy. Right.
that okay, they never knew this is happening, and suddenly it came as a surprise to not just my parents but everyone else. Everybody else. Yeah. Sir, any particular incident that sparked, that motivated you to join NDA? Any moment where you realized that I want to serve the country, I want to do something different? So as I said that it was from the very beginning. I mean, Okay. that So love you're- for the uniform, patriotism तो सब में होता ही है. You होता have that bit of sorry, just to ask you, ये हिंदी English what do you want? मैं जैसा आप ठीक लगे. अच्छा, मेरे को लग रहा था it's in English. नहीं, ठीक है. मैं इंग्लिश, आप किस में कंफर्टेबल? I mean, okay in both. अब ठीक तो है. We will do mix then. Okay, ठीक है. Okay. Okay. So देखो patriotism is there in everyone. Okay. एक हर इंडियन में एक सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म होता है. बाकी कंट्रीज में भी होता है. पाकिस्तानी जो है उनके लिए अपनी कंट्री का है, हमारे अपने का होता है. दैट्स पार्ट. लेकिन जिनका फोर्सेस की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है थोड़ा, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा आप मान लो एक लव टू सर्व द नेशन. तो दैट इट एंड इट्स नॉट अ ट्रिगर कैन बी, जैसे मैंने बताया मूवी वाला केस हुआ है या कुछ और इंसिडेंट्स हुए होंगे जो मुझे भी याद भी नहीं है. वो ट्रिगर भी तुम्हें तब करेगा जब तुम्हारे माइंड में एक ड्रीम है. बिल्कुल. इफ यू डोंट हैव अ ड्रीम टू गो देयर तो 50 ट्रिगर्स आएंगे, इट विल नॉट बॉदर यू. You should have a purpose, a goal to which you should work. I Of totally course. get that. Sir, while you were serving your time for the nation in IF as a IF pilot, what was the most dangerous situation you were put into, or some incident or something while you were serving the nation? What was that particular thing which was you were like, oh, now, oh my God, I'm gone. Some situation like that. नहीं, ऐसा सिचुएशन तो एज सच नहीं होता बिकॉज लुक एवरी पार्ट इन द फोर्सेज व्हेन यू आर देयर इट्स डिफरेंट, एवरी डे इज डिफरेंट. सो जब ट्रेनिंग होती है इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. Right. एनडीए ट्रेनिंग इज वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी डिफिकल्ट ट्रेनिंग. Right. वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड एट दैट लेवल. NDA. एनडीए इज वेरी डिफिकल्ट. Sir, sorry to interfere. I would like to ask one question. So, it is more of a physical thing, or it is more of a mental breakdown when you are going through the training? What is it about? So look, these are two words which we all know, Okay. फिजिकल एंड मेंटल, Yes. राइट. सो द थिंग इज कि एनडीए में या इस टाइप की ट्रेनिंग में क्या होता है कि दे डोंट जस्ट ब्रेक यू फिजिकली. Okay. That's anybody can do it. Okay. Right? The aim is to break you physically and then push you further. So that's where your mental capacity comes in. Only then you will be able to achieve the higher level of physical and mental fitness, or should I call mental toughness. Okay, so they break you to a level where you almost give up, that I'm done. But now how to take you beyond that level is that's why we call it tough training. No, that's how it is. I was asking that while you were serving the time in IAF as an IAF pilot, was there any situation like that where you felt very dangerous, very risky, or something like, okay, now I'm gone? यार देर आर सिचुएशंस, आई डोंट नो हाउ डू वी कॉम्प्रिहेंड, बिकॉज जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो हम ऐसा सोचते नहीं है, बिकॉज आपको कोई भी सिचुएशन में सडनली नहीं डालेगा. ऑल दीज ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग इज फॉर दैट पर्पज ओनली, कि अगर कल को आप ऐसी सिचुएशन में होते भी हो तो आपका फोकस सिचुएशन पे हो रादर दैन डर के ऊपर. Right. राइट. तो या आई मीन जहाँ तक एक अननोन के हिसाब से अगर मैं बोलूँगा, हाँ फ्लाइंग में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ग्राउंड पे सिचुएशंस होती हैं, ट्रेनिंग में ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, बट देन जैसे मैंने बताया वो ओवर द टाइम होता है. Do you remember any the most deadly one, or maybe you were scared? ऐसे we are always scared for a lot of things. That's human tendency. Anybody who says he's not scared is lying. Is lying. That's not how it is. You're always scared for a lot of things, but you are not alone there. That's plus point. That's the आप plus अकेले point, नहीं right. हो, अकेले नहीं आपके सब लोग साथ में हैं, वो सेम चीज़ से गुजर रहे हैं. So we motivate each other. And sir, you were grounded from a torn shoulder, Yeah. right? Yeah. I've researched about you. So what mindset and what, because I think it must have been like, my career is over now when that happened. There must have been that thought, right? So what mindset you have to adopt to be a person like that, to come across, to get up again and just boom. Okay. So I never thought my career is over, because I did flying for when I was doing my flying and all. So then I switched into bodybuilding in Air Force. Right. Because I in my first posting itself, I was working out in a gym. That time I had no idea of bodybuilding कि क्या होती है. I knew it's a game, but nothing else. हाँ जी. So I was working out in a gym and कुछ trainers ने मुझे approach किया and they said that sir, why don't you compete in bodybuilding? It was a civil gym outside. तो मैंने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं है and it's not my game. वो कह रहे लुक सर, बिकॉज आप इतने सालों से स्पोर्ट्स और वो सब कर रहे हो, आपका बेस बहुत अच्छा है. मिस्टर बड़ौदा कॉम्पिटिशन इज अबाउट टू कम इन नेक्स्ट 8 to 10 months, वील प्रिपेयर यू. मैंने कहा ठीक है यार, आई डू इट. इट्स
एक वो ट्रिगर था दोबारा स्पोर्ट्समैन वाला कीड़ा तो था ही, ठीक है. सो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई वाज फ्लाइंग आल्सो, preparing also. It was very tough to do both things, but then I did, and in my very first competition which I played, I won the gold medal in Mr. Baroda. And post that, फिर the Air Force team took notice, everyone, they started calling me, and post that for all the years, subsequent years, I was winning all the competitions. Whichever competition I took part, I was a medalist. You were? Almost all competitions. Wow. So multiple district, then 3 times I was Mr. Gujarat, and then services medalist, command medalist, nationals. After that, when I suffered from a shoulder injury, and it was a major one, I had a torn shoulder. So the Air Force gave me a choice that, okay, you, after the surgery, when it was over, they said, look, if you want to continue in the forces, you absolutely can in any of the branches, and even can come back to flying after some time once you recover. Right. Or you can quit if you want to, because you are falling in the time bracket, एक particular time bracket होता है. So that time I chose to quit because मेरे को ऐसा लगा यार कि flying is not something I'm very pro in. I mean, it was just a normal thing for me to do. I was not very keen in flying only. How's the normal thing for you to do? Just a question. So what happens is, let's say everybody has certain passions in your life. Okay, so one is something which you wanted to do, and when you do it and you realize, theek hai, it's a good thing, but it's not exciting me too much. Right. For when I did flying, I did a lot of flying here and there, all the roles and everything, but I found okay, it's good, but for me again, my real passion from the very beginning lied in fitness. So when I got this opportunity, मैंने कहा ठीक है, I've already served almost 14 years in the forces, हो गया. अब अगर मैं continue करूँगा तो फिर I'll have to wait another 6 years plus to come out of the forces. That's 20 years का एक टाइम होता है. Right. और वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज फिर एक एज ऐसी हो जाती है कि माइंडसेट बहुत स्टर्बन हो जाता है, एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं. How old are you, sir? Just सो I'll be 41 in this July. touch wood. You don't look like 41. Thank you. Yeah, you don't look like 41. Thank you. Yes, sir. So I'll be 41 now. But then imagine now, had I been in the forces, मैं अभी भी रिटायरमेंट नहीं ले पाता. I would have taken me around 3 years more. Yes. So by the time at around 44-45 years of age, it's very difficult to come out and start anything new. Right. That's why I took that chance back then, and I was working on couple of things in business and all already. Yes, because I yes, knew कि papers तो मैंने put up कर ही दिए थे. Yes. So I knew मुझे इसमें 1-1.5 साल 2 साल लगेंगे process में. right. तब तक I'll at least prepare outside so that when I step, I'm not absolutely new. I just get into a ready business. Sir, and jobs like NDA or like similar jobs, I feel like that they break a person physically and mentally, right? And everybody, they lose some part, they gain some part. So if you're okay answering this question, so do you have anything in your mind where you think that, okay, I lost this part, but I gained this part? Okay, so look, there are 2-3 things which people can say it in a negative manner, also in a positive. I'll give you examples. So when we were in NDA, as I said, it was one of the toughest training you can undergo at that age. So how old are we? 17, 18 years of age when we were You in did that NDA? at that time. At that time. That's the age of, it's immediately after 12th, no? Yeah. So अब उस टाइम मेरे जो स्कूल मेट्स थे, I remember I had this group of friends, they're very good friends, and I was the only one, barring 1 or 2 people more, who either were from business families in Delhi, or one or guy who is still there. Rest, everyone, the entire group went to US. Okay, अब क्या होता जब वो हमें तो अलाउड नहीं था, वी आर नॉट इवन अलाउड टू बी ऑन सोशल मीडिया बैक देन, एंड देयर वाज नथिंग, सोशल मीडिया इतना कुछ था भी नहीं. बट स्लोली जैसे वो पता लगने लगा, फेसबुक और आया और देखा कि दीज गाइज आर outside in US enjoying their lives, doing something XYZ उस एज में, then you start थोड़ा सा missing that part. प्लस एक और चीज़ जो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होती है, बीच में नहीं थी, अब दोबारा हो रही है, इनिशियल होती, दैट वाज द मनी. So ultimately you are a government employee, you're a class 1 employee. It's just like you or the civil servants, IAS, everybody at the same level. But the salaries which you get are fixed. So even if you want to earn more, or you want to, you have that talent to earn more, you don't have any opportunity. It's not allowed to do anything. So that's where you do feel restricted initially. But ठीक है, फिर then again pros and cons दोनों side है. Grass is always greener on the other side. So if you look outside, they say a lot of things about being in the forces. I have seen both the lives, outside and inside, absolutely different. I mean, there are great things in Forge and great things outside. Outside Forge.
Sir, what kind of, you were an IF, right? What kind of aviation you used to fly? I was flying transports, big jets, the Big jets? yeah, the So have commercial you- aircraft. Yeah, commercial aircrafts. Yes. Okay. Like have you? Airbus, Boeing. Yeah, Airbus Boeing was not there in Air Force. उस टाइम एक आदि होता था. हाँ. मतलब we had जो मैंने we started with Dorniers, Avros, AN32s, these type of aircraft. Right. So They were do you- military aircraft. Yeah. Yeah. So of course, as a pilot, I really want to ask you this question because you can tell me clearly what happened in Ahmedabad about the Okay. whole Air The India entire situation. Air incident. 717. Yeah. So उसके लिए I have been on these news channels from the day it happened. Yeah. And day night we were on news Yeah. channels. Yeah. And all the aviation experts, I was listening to international pilots. I was in talks with guys here, very senior guys, very senior pilots and all. Nobody had any, I'll say, answer for that because look, as let's say I am in aviation. So with whatever expertise I have, the other person has, with that they can just look at what has happened. There was actually so many questions which came up and there was no answers because the entire world was shocked. So the first thing which I always say is that it has not happened to any old aircraft. It is like imagine you're driving in a Rolls Royce. How many chances are there that the brakes of Rolls Royce will fail? 1 in a Less billion. than- yeah, 1 in a billion, of course. This is exactly It is an the same exception. case. So this is an exception. So nobody thought that okay, a Dreamliner will crash. So Boeing Dreamliner and Airbus 380 are the top of the line aircraft for commercial flight. More than 1200 plus aircraft of Dreamliner are flying in the world. This is the first and only crash which has happened. And you could not blame anybody. The pilot, Captain Sabharwal, who was there, he was a trainer on type. He was a trainer for 787. He used to train the pilots to fly that aircraft. Whoa. Right? More than 8,000 hours of flying. There's no way that he can- could really actually make a mistake like this. Mistake fuck like up, that, yeah. right, sir? Right. Then the aircraft itself is so advanced that if there is a problem in the aircraft, it will give you 20 warnings even before starting the aircraft. The moment you start the aircraft, switch on, avionics come up. If there is anything, it will show up. Then what could have happened? Because Yeah, I देखो think- इसका जो technical हमें जो what we looked at when the Yeah. aircraft was going down. yeah, So what happened was when you were running on the runway, अगर आप aircraft में बैठे हो तो when the pilot opens the throttle and the aircraft is running on the runway, there is a speed called V1, okay. a speed. So Yeah. that speed is before achieving that V1 speed, okay, you can see the speed on the meters. Yes, yes. If there's an emergency in the aircraft, you can quit the takeoff. You Before can say. entering the active runway. No, the moment you're in the runway, In the runway. active runway, before takeoff, when the aircraft is running at full speed on the runway, so there's a speed which comes, which is called V1. Post V1, there's another speed which is VR, V rotation, rotation speed. Yeah. अगर V1 से पहले कोई इमरजेंसी आती है तो मैं टेक ऑफ को अबॉर्ट कर सकता हूँ अगर मेरी स्पीड तेज भी है तो Okay. V1 के बाद आई कैनॉट अबॉर्ट ठीक है एंड VR पे यू रोटेट इसका मतलब है देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग टिल रोटेशन Till मैंने rotation. टेक ऑफ करने तक कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। कोई इमरजेंसी नहीं आई कुछ नहीं हुआ विद इन 200 फीट ऐसा क्या हुआ कि द स्ट्रेट कॉल वाज अ मेडे कॉल So when we give an emergency call, it could be normal, okay, having this emergency. Then another one is pan call. That's the second level of call, and the last level of call is a mayday call. A Mayday mayday. call. A mayday call किस केस में दी जाएगी या तो you have a engine failure, you have an engine fire, or you have a total electrical failure which happens. Due to which controls are not, you're losing the controls Of and course, all. of course. तब mayday call दी जाती है 200 फीट में mayday call देने का मतलब है कि suddenly something happened in that role only. Yes. Number two, there was no engine failure. We could see one engine failure. क्योंकि when the aircraft is flying like this, Right. if let's say my right engine fails, Right. तो left engine तो work कर रहा है, तो हाँ you will जी। see a movement in the aircraft. Right. To control the aircraft also, थोड़ा movement होगा. थोड़ा मोमेंट होगा. There was no movement. There was no bird strike. कुछ भी नहीं दिखा. There was no engine fire, right? But जो हमने चीज़ें correlate करी, firstly the survivor, the lone survivor, his statement was very strong because he said कि इंजन में एकदम एयरक्राफ्ट में एकदम लाइट चली गई इमरजेंसी लाइट्स ऑन होगी इसका मतलब देयर इज अ टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर ये भी बहुत शॉकिंग है व्हाई बिकॉज टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ तो है उसके हिसाब से लेकिन 787 के अंदर देयर आर 3 बैकअप्स इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि उसका इलेक्ट्रिकल फेलियर ऐसा हो रहा है कि वो ऑन ही नहीं हो रहा वो On ही 3 नहीं हो बैकअप्स हैं उसके राइट Next is the landing gear was down. So the moment I take off, the first thing I is put up my landing gear. Yes. Aircraft को clean up करता हूँ ताकि Yes. it gets lift to
go up. Landing gears were down. अब वो landing gears down जान के थे या बिकॉज इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से हाइड्रोलिक फेलियर भी हुआ तो वो ऊपर नहीं जा पाए. दैट इज अनदर क्वेश्चन. देन so if you're sitting next to a wing in the aircraft, if you ever sat, you'll see पीछे से ऐसे 2 flaps बाहर आते हैं. That overwing exit you're talking about. Sort of. Okay. विंग के पीछे ऐसे फ्लैप्स होते हैं. Yes. तो ये जो फ्लैप्स होते हैं ये जनरली टेक ऑफ और लैंडिंग के समय होते हैं. खुलते हैं. नीचे की तरफ आते हैं आप देखोगे. मतलब विंग से एक अलग से ऐसे निकल कर आते हैं फ्लैप्स. Okay. यू शुड ऑब्जर्व, कभी देखना आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी वीडियोस. दैट फ्लैप इज ऑलवेज डाउन, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर एंगल, क्योंकि वो आपको लिफ्ट करने में हेल्प करता है और लैंडिंग के समय हेल्प करता है. इस समय फ्लैप्स ही नहीं थे, वो देवर इन क्लीन कॉन्फ़िगरेशन. एयरक्राफ्ट इन क्लीन कॉन्फ़िगरेशन हो ही नहीं सकता टेक ऑफ में, वो भी फुली लोडेड एयरक्राफ्ट. देन अनदर ऑब्जर्वेशन वाज, इफ़ यू सी इन दी एंड एक आवाज़ आती है विच मोस्ट पीपल डिडंट अंडरस्टैंड, विच पीपल टोल्ड इवेंचुअली. सब कुछ फेल हो जाता है, लेट्स से आपके इंजन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो एक रैम या टर्बाइन होती है. इट इज़ अ थर्ड फैन विच कम्स आउट फ्रॉम द बिलो ऑफ द एयरक्राफ्ट. Okay. From the belly. हाँ, बेली ऑफ द एयरक्राफ्ट. ऐसे एक पूरा डंडा निकलता है, उसका क्या 2 पंखियाँ 3 पंखों का एक फैन होता है, प्रोपेलर, उसे हम रैट कहते हैं, रैम या टर्बाइन. Okay. वो बहुत तेज रोटेट करता है और उसकी आवाज़ इज लाइक जैसे वो शादी वाले पंखे नहीं होते वैसे उसकी टर्र करके बहुत तेज आवाज आती है. दैट रोटेट्स टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एवरीथिंग इज फेल्ड. दैट आल्सो केम आउट. Okay. For current and all. हाँ, कि एटलीस्ट यू नो, लेकिन फिर भी the aircraft went down, and the best part was, if you actually see, aircraft went absolutely straight down. Right. There was no left right wing. इसका मतलब था pilot must have tried everything in his capacity to lift, लेकिन वो नहीं हुआ. So timing was very less. और मैं एक और चीज़ why I know is why, because मैंने अपनी maximum flying उसी रनवे से करी है, अहमदाबाद बड़ौदा रनवे से. अब वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं उस रनवे से टेक ऑफ करता हूँ, आसपास सारी आबादी है. अगर मुझे थोड़ी भी हाइट मिल जाए और मेरे सामने कोई पानी का ग्राउंड हो या कोई खाली ग्राउंड हो, मैं फिर भी कोशिश करूंगा वहाँ लैंड करने की. डिचिंग हो जाए. यहाँ तो मैं कर ही नहीं सकता. तो ये एक वो ये समझ लो यार, जैसे कोई डिजास्टर होना था एंड द एंटायर इवेंट, हाँ, सारी इवेंट्स ना लाइन अप कर रहे थे कि ये हो, ये वैसा था. और गिरा भी वही मेडिकल स्कूल वो वहाँ पर भी. अब वो देखो, अब हाउ द लक प्लेज इन, जिसके ऊपर डॉक्टर्स जो उनकी डेथ हुई है, स्टूडेंट्स गए हैं, वे वर दे. दिस इज प्योर 1 in a billion एक्सीडेंट, जिसको कोरिलेट करना बड़ा मुश्किल है. यू विल इवेंचुअली ब्लैक बॉक्स मिल गया तो उससे चीज़ें निकलेंगी, भी उसका रीज़न आएगा. अभी तक नहीं निकला ना वैसे सर. नहीं, टेक्स वीक्स एंड मंथ्स टू गेट दैट. ऐसे नहीं होता. सो व्हाट हैपेंस इज, वंस यू रिकवर द ब्लैक बॉक्स, थैंकफुली इसमें आराम से मिल गया क्योंकि ये कोई पानी में नहीं गिरा था. तो उसके बाद पूरी टीम बैठती है. दैट्स द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, एविएशन एक्सपर्ट्स जो होते हैं एक्सीडेंट इंसिडेंट को स्टडी करने के लिए. वो फिर उस ब्लैक बॉक्स को मिल्क करते हैं. मिल्क का मतलब है सारी कॉन्वर्सेशंस, रिकॉर्डिंग सब निकालते हैं. फिर सारी चीज़ों को वो एक साथ बैठ कर एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर इवेंट्स को जोड़ते हैं. इसलिए हफ्तों महीनों लगते हैं टू गेट द फाइनल रिपोर्ट ऑफ एनी एक्सीडेंट इंसिडेंट. It's like that. Yeah. मतलब you can't make a decision just by listening to the audio. No, definitely. There are a lot of यू कैन अगर कुछ और नहीं है, यू कैन, लेकिन ऐसे मानते एक बंदा नहीं होता ना, पूरी टीम है. सो एवरीबडी विल हैव देयर आइडियाज, देयर अंडरस्टैंडिंग, सब लोग बैठेंगे, फिर कंक्लूसिव जो डिसीजन होता है फाइनल, क्योंकि वो पब्लिक में जाना है. और ये तो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर है. सबसे बड़ा, एग्जैक्टली. सर वो तो एक मिरेकल है फॉर द लोन सर्वाइवर. आई डोंट नो हाउ ही जस्ट केम आउट. इट इज I think, sir, a news came out that there was a passenger sitting on the same airline as like Dreamliner. Earlier 111. Yeah, and that guy also got saved amongst all the people, and he was also sitting on 11A. या देखो, आप कुछ भी तुम कोरिलेशन निकाल सकते हैं. हम 11 है, उसकी टिकट का रेट भी बढ़ Isn't it गया, like बता रहे हैं. नहीं, उसका billion- ये भी है कि वो उसकी 1 in a billion chance. वो उसकी एक्चुअल सीट नहीं थी. ये भी एक कहानी आई है कि उसने एक्सचेंज की थी. Can be. There are But so then many things like it that. was a miracle. I mean, there are certain things which are beyond science and logic. एग्जैक्टली. कोई point नहीं है इसको discuss. Sir, what happened in Pahalgam? Of course, Operation Sindoor. The result was Operation Sindoor. So, sir, what do you think to conduct and to, execute an operation like that? What are the plans? What do you start with? How do you actually, from a perspective of an IAF pilot, if you were there, then what do you think? What is the whole procedure which goes on? The planning goes on. So I'll give you from the perspective of a Fauji itself. I mean, Yes. not Yes. a pilot only. Yes. So firstly, look, when we talk about training in any defense forces in the world, उस ट्रेनिंग में ही बहुत सारी चीज़ें आपको उसी हिसाब से प्लान करी जाती हैं कि उनको पता है भाई उनकी एडवर्सरीज कौन है. फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि हमारा एडवर्सरी चाइना है, पाकिस्तान है, हमें ये चीज़ पता है. तो
आगे भी जब पूरी स्टडीज़ आप करोगे फौज में, जो भी ट्रेनिंग हो रही है वो सारी इसी हिसाब से होती है कि ये एडवर्सरीज़ हैं तो इन एडवर्सरीज़ के ये वीक पॉइंट्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अगर कल को कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें ये एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं, ये एग्जिट हो सकते हैं, अटैक यहाँ से आ सकता है, ये सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और ये पहले से ही रेडी होती है। अब क्या होता है, व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपन्स, लॉट ऑफ थिंग्स चेंज, सिनेरियो चेंज होता है। फिर उस समय ऑल दीज जनरल्स एंड एवरीबडी हु इज देयर, वॉर एक्सपर्ट्स, दे आर देयर इन द वॉर रूम्स, ठीक है, विद योर डिफेंस सेक्रेटरी एंड दोभाल साहब अब तो हैं ही, एंड प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ऑलवेज देयर, ही इज इन देयर इन द इनिशियल टाइम, बट बाकी टाइम पे एक्सपर्ट्स आर देयर एग्जीक्यूशन के टाइम। वो फिर करंट सिचुएशन को देखते हुए स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहते हैं कि हमने पहला ये करना है, इस तरह सरप्राइज देना है, ये एलिमेंट रहेगा, यहाँ पे हमारे अटैक पॉइंट्स रहेंगे, उसके बाद उनकी रिटेलिएशन क्या आ सकती है, उसका हमारा जवाब क्या होगा, अगर हम फेल हो रहे हैं, हमारी गड़बड़ हो रही है तो हम अपनी स्ट्रैटेजी, वो सारी फिर टाइम टू टाइम लुकिंग एट द सिनेरियो चेंज होता है। Based on a situation there. Based on the situation. And sir, there was one more story. I don't know if it's a story or a fact, but it was floating around in the news or social media, and even I saw that, and I thought that this might be possible. So it was that the Pahalgam attack, the terrorists were not Pakistanis, but okay. So when the war was happening between Pakistan and India, so USA funded IMF. Right? And IMF funded Pakistan back, and US is the 20% holder for IMF. So technically, and US was on India's side. Then why did they fund IMF? And so the whole scenario was coming out as that India and Pakistan are pawns. The game was between US and China. So what is your perspective on this? Okay, so देखो, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, इट इज़ वेरी वेरी शेडी, वो खिचड़ी है पूरा। बट ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होना, ऐसे वॉर होना कई बार ज़रूरी होते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। वन ऑफ द रीजन इज़ टू वेक द कंट्री अप। समटाइम्स द कंट्री गेट इनटू डीप स्लीप एंड इट्स टू मच ऑफ पीस, नो? सो व्हाई आई ऑलवेज टेल, स्पेशली जेन जी, जेन अल्फा, जो अभी लेटेस्ट कार्टून्स आए हुए हैं, yes सो आई ऑलवेज टेल दिस जनरेशन कि यू आर इन अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट कंफर्टेबल टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। True. इतना कंफर्टेबल टाइम्स कभी थे नहीं। और व्हेन द टाइम्स आर टू कंफर्टेबल, द जनरेशन स्टार्ट्स गेटिंग वीक, एंड दिस सच थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू शेक अप द कंट्री एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि सर यू आर नॉट अलोन, ठीक है, आप ये जो महात्मा गांधी वाले प्रिंसिपल्स हैं इनके ऊपर नहीं चल सकते। दीज प्रिंसिपल आर फाइन ड्यूरिंग पीस टाइम, Yes. बट व्हेन यू आर सराउंडेड बाय एनिमीज, ठीक है, एंड you are trying to behave like Mahatma Gandhi with everybody, they are not Mahatma Gandhi, They you are not, understand? right. So you better get back to and we were not even, I mean, I am very anti Gandhi philosophy, I am not at all that person, openly बता रहा हूँ, ठीक है, it's not that I don't respect Mahatma Gandhi, no, I'm not at all follower of that philosophy. Yes. Neither were Hindus ever followers of that type of philosophy. Okay. हमारे को एक चीज़ लोग भूल जाते हैं कि हमें भगवत गीता का उपदेश भी ना जंग के मैदान में दिया गया था। ये शायद हम भूल जाते हैं। क्या बात है। हमारे जो भगवान है ना, अगर उनकी एक हाथ ऐसे आशीर्वाद देता, दूसरे में शस्त्र है, तो ये चीज़ हमारे को जो हमारी हिस्ट्री को बर्बाद किया गया ना, वो यही यू शुड नॉट वेक अप, राइट? वी हैव अ ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ ऑल, ब्यूटीफुल हिस्ट्री, yes sir, of course. सो होता क्या, दीज टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर इंपॉर्टेंट कि ये जनरेशन हिले कि देखो ऐसा होता है, ऐसे लोग मरते हैं, ऐसे दर्द होती है, कोई मरता है, ठीक है। सेकंड इज कि ये तुम्हारी वीकनेस को भी पता लगेगा जब ऐसी चीज़ें होंगी। तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, एनिमी की वीकनेस क्या है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, ये तुम्हें रियल सिनेरियो में तभी पता लगेगा। जैसे इसमें लॉट ऑफ थिंग्स वर एक्सपोज ऑन पाकिस्तानी साइड, आई मीन बैडली एक्सपोज, राइट। जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं तो देखो एक चीज़ और पता लगती है वॉर में हमेशा कि तुम्हारे दो चीज़ें जो बताता हूँ। पहली चीज़ कि तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स कौन है, हमेशा, राइट। टिल डेट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग in all the major wars, this is not a war, it's a conflict. War was only 71 was a war, 99 was a conflict. This is a conflict, it's a small conflict. War ऐसे केसेस में जो तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स अभी तक हमारे इजराइल और रशिया रहे हैं हमेशा, irrespective whether you do what you want to, ठीक है। नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रशिया यूक्रेन वॉर में निकल कर आ रही है, हमारे केस में आ रही है, इजराइल हमास में आ रही है, एवरीबडी, you will fight your own battles. Nobody will help you. They will help you financially,
दे विल हेल्प यू विद वेपन्स, लड़ोगे तुम, मरेंगे तुम्हारे लोग, वो तुम्हें सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, राइट? यूक्रेन को पूरा यूरोपियन यूनियन हेल्प कर रहा है, यूएस हेल्प कर रहा है, लेकिन मर यूक्रेन वाले रहे, राइट? तो यू हैव टू गेट स्ट्रॉन्ग ऑन योर, वो तो थैंकफुली पोस्ट 2013 मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद द कंसेप्ट ऑफ मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत हुआ, and getting India stronger has taken roots in a very strong manner. In a very strong manner, right, sir? Do you think that if these wars are going on, like right now also Israel and Iran, they are fighting, and what happened? I think Israel said something and US didn't like it and they attacked their bases, right? No, so Iran Israel conflict जो है, या बोलेंगे war तो नहीं है, it's a conflict again. ये अभी का नहीं है, और ये खाली न्यूक्लियर वाला रीज़न नहीं है, ये आइडियोलॉजीज़ की वॉर है. इट्स ज़ायनिस्ट एंड दी जूज बेसिकली एंड दी मुस्लिम्स, जस्ट लाइक हिंदूज एंड मुस्लिम्स के एक वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हैं, राइट? और सेकंड, इसलिए एक तो ये प्रॉब्लम है. सेकंड प्रॉब्लम आती है कि यूएस का और इजराइल का, स्पेशली इजराइल का, एक शुरू से बड़ा सिंपल प्रिंसिपल रहा है कि वी आर इतनी सी कंट्री एंड वी आर सराउंडेड बाय ऑल मुस्लिम कंट्रीज. तो अगर कुछ भी होता है, जो पहले भी अगर आप उनकी वॉर हिस्ट्री स्टडी करो, उनकी सर्वाइवल एट स्टेक आ जाता है. भाई इतनी सी कंट्री है, थोड़ा भी अब 2-3 कंट्रीज एक साथ अटैक करती है, वो कैसे बचाएंगे? तो उनका फंडा क्या है, हम अटैक तो सब में करेंगे. अगर हमें थोड़ी सी भनक भी हुई, भाई इंडिया की तरह नहीं है, इंडिया इज अ बिग कंट्री, सो ऐसा नहीं है कि इंडिया को पता लगा पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा, हम अटैक कर देंगे, ऐसा नहीं होता. ना पाकिस्तान ऐसा करेगा, ना चाइना ऐसा करेगा. इजराइल इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री. उनको पता अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, ठीक है, और मैंने पहले प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स नहीं करी, उनको रोका नहीं, तो मेरा सर्वाइवल स्टेक पे आ जाएगा. तो फिर वो पहले ही अटैक कर देता. तो दे आर ऑलवेज अगेंस्ट ईरान बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर, राइट? पहले भी 1980 से चल रहे हैं अटैक्स. दे हैव अटैक्ड एंड ब्लास्टेड देयर न्यूक्लियर साइट्स मल्टीपल टाइम्स. बट मैंने ना लास्ट ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी एक ही चीज़ बोली है, भाई तुम ईरान को कितने टाइम तक रोकते रहोगे? आज नहीं तो कल दे विल मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब. दे ऑलरेडी हैव एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है, उनके पास. अब तुमने उनको अटैक करा, कुछ चीज़ें ब्लास्ट कर दी, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने भी वो करा हुआ था, ये प्रिज्यूम कि ये होगा, राइट? दे हैव ऑल देयर स्ट्रैटेजीज इन प्लेस, राइट? तो उन्होंने भी अब अपना सारा यूरेनियम निकाल लिया. इवेंचुअली दे विल स्टार्ट अगेन, ठीक है. तुम कब तक करते रहोगे? ऐसे करोगे तो फिर मिडिल ईस्ट में पूरा जो प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल मार्केट्स हिलेंगी, शेयर मार्केट्स विल गो अप एंड डाउन, ऑयल प्राइसेस होंगे. तो इस टाइम ना, जो इसलिए मैंने बताया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत बड़ी खिचड़ी है. एंड लेट मी टेल यू, एवरी वॉर विच इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, एवरी सिंगल वॉर, the country which is at the top responsible for everything is America. US, yes. अमेरिका जो है ना, उसके लिए देखो, वॉर इज अ बिजनेस, ठीक है. एंड अमेरिका की जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, इतनी बड़ी वेपन इंडस्ट्री है, उसको सस्टेन करने के लिए वो शांति उसके लिए एंटी है. वो चाहता ही नहीं शांति हो. शांति होगी तो वेपन्स कौन खरीदेगा? सो इट विल नॉट लेट दैट शांति प्रिवेल. लेकिन एक चीज़ लोग भूल जाते हैं, हैव यू एवर सीन एनीबडी अटैकिंग अमेरिका? नो. उसके लैंड तक कोई पहुंच. अच्छा, अभी ईरान इजराइल वॉर हो रही है, ईरान इजराइल को मार रहा है, इजराइल ईरान को मार रहा है. ये दोनों, यूएस के ऊपर एक पटाखा भी फटा ना, यूएस बेस पे अटैक कर दूंगा. क्या व्हाट इज यूएस बेस? 10 टेंट लगे होंगे, वो बना होगा. अच्छा भाई अटैक करना है, उन्होंने कर देंगे, उधर चले जा, वो कर. दैट्स टाइम पास. दे अटैक्ड इन कतर आल्सो, राइट? दे डिड नॉट ट्राई, दिस ऑल प्री प्लान्ड. अच्छा, दिस वाज ऑल ऐसा. हाउ मेनी अमेरिकन्स डाइड? जीरो. ऐसा हो सकता है कि आई एम डूइंग मिसाइल स्ट्राइक्स, ठीक है, एंड जीरो अमेरिकन्स आर डाइड. जीरो अमेरिकन्स होता है, राइट? तो ये प्रॉब्लम है. इट्स ऑल खिचड़ी. ऑफ कोर्स सर. एंड सर, हाउ डज योर फिटनेस, ठीक है, this was some questions which I want to ask you. How did your fitness impacted your entrepreneurship? You started natural what was the end? Okay, so my brand which is there, which is my company, it's called Mango Herbs. And I'm with a company called Natural Teen from day one. Natural Teen? Yeah. Okay. And then there is also We Are Stupid. We Are Stupid is my YouTube channel. Launched another brand called Cafe Tea recently. Can you please tell the audience that what all these 3 businesses are about? Okay. So firstly, all these things are somehow interlinked with my passions. Okay. So when I came out of forces, मुझे entrepreneurship के बारे में कुछ नहीं पता था. I had no idea. ठीक है. I'm a first generation फौजी, first generation pilot, no background, nothing. First generation businessman, nothing. So I started from absolute scratch.
started understanding things, how things run. I opened a couple of gyms in Delhi, you know, running very successfully. And then eventually I shifted on to online trainings and then started my own brand, which was Mango Herbs. Again, when I was working, मेरा सिर्फ एक ही concept था. Number one, to make sure that Indians की जो सबसे बड़ी problem आती है कि अच्छे quality products यहाँ मिलते नहीं हैं, हमें लोग वो solve करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा झूठ है. Right. Problem is कि Indians maximum Indians पहले अच्छे products demand ही नहीं करते थे. Right. वो कहते हैं भाई उन Indians की एक सबसे बड़ी problem क्या है? सस्ता. Right. ठीक है, और डिस्काउंट्स. कोई भी ब्रांड जो बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहा है वो तुम्हारे को नंबर 1 सस्ता देगा ही नहीं, बन नहीं सकता. ठीक है. सेकंड, वो कभी भी ऐसे डिस्काउंट्स नहीं देगा 60% ऑफ, 70% ऑफ, एक पे एक फ्री. दिस इज ऑल स्कैम. ठीक है. इन माई ब्रांड्स ऑल्सो द मैक्सिमम डिस्काउंट आई हैव एवर गिवन फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड द ब्रांड इज 20%. दैट्स ऑल. ठीक है. वो भी रेयरली होता है, वैसे 10% चलता है. 10%. या उसके बाद फिर आई मेड श्योर कि अच्छा मुझे ये भी पता है कि मैक्सिमम हाई क्वालिटी हर्ब्स हुए और बहुत सारी चीज़ें इंडिया से दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं. तो वो चीज़ें हम यहाँ क्यों नहीं यूज़ कर रहे? ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, Like एवरीथिंग, ऑल योर हर्ब्स. let's talk about Mango Herbs. So what is your best product there? Okay, so it's not one. So we have a range of products on different needs of human body. For example, we have a product called Beast Pro. It's primarily a Beast what, sorry? Beast Pro. Beast Pro. All our products end with Pro. Okay. So and ये भी एक accident ही था, मतलब I just named my first product which I launched, Shilajit I launched. I named it as Shilajit Pro. तो मेरे viewers ने ही खुद बोला सर अश्वगंधा प्रो कब आ रहा है, वो कब आ रहा है, ये एक मार्क बन गया. हाँ. So they started, मैंने कहा ठीक है, good idea, and I started launching those products. तो Beast Pro is a libido and a strength booster. Okay, but it's very very potent, and it's one of our top selling product. We have another top selling range which has a bone supplement called Bone Pro, then another one Joint Pro, Yes. and the third one is a multi collagen Pro. So it's a kit of bone and joint supplements. Yes. Right. So ऐसे बहुत सारे products आते हैं and they're all great selling products. They're all great selling. Yeah. So do you use these things in your like in your life as well? All these supplements? Yeah, this is where I always tell people. Yeah. Every single product I have launched, my entire family is using all the products, including myself. All the products. For me, the ethics in business comes first. और मेरे लिए ethics का सबसे बड़ा मतलब to tell people is कि अगर मैं अपनी फैमिली को ये चीज़ नहीं दे सकता तो मैं तुम्हारी फैमिली को कभी नहीं दूंगा. नहीं दे सकता. So every single product I design is keeping my kids, my wife, my parents, my relative, everybody in mind. तब design होता है. Makes sense. And guys, if anybody wants to get products from Mango Herbal, then of course he's a IIF pilot, an ex-IIF pilot. So very ethical. So I'm sure the business is not a scam at all when you're saying. So I'll just put the link down. No, thank you. Yes. And sir, tell me something about Natural Tile. So Natural Teen is a the Natural Teen Sorry. The Natural Teen is basically it's an Indian company, but they were the first company in Indian history to start importing protein from Europe. Okay. And they were importing protein from Germany. And why again they started was Natural Teen started was because they found this big problem in India back then when they started of fake proteins. और उनका भी यही था कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अच्छे प्रोटीन नहीं मिलते, भाई थोड़े हाई कॉस्ट पे मिलेंगे लेकिन इंडिया में क्यों नहीं मिल सकते. इंडिया में क्यों नहीं मिलते. सो दे स्टार्टेड सर्चिंग इन इंडिया में रॉ वे प्रोटीन का बहुत इशू था. यहाँ का जो रॉ वे क्वालिटी होती है दैट्स नॉट वेरी गुड इन टेस्ट, नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर सप्लीमेंट एज. राइट. एंड इन्होंने यूरोप में फिर दे वर स्टेइंग इनमें से एक वन ऑफ द गाइज इनके जो ओनर हैं ही वाज स्टेइंग इन जर्मनी. वहाँ पे इन्होंने टाई अप करा and German standards are very very strong. I mean the world sways by the European standards, especially German standards. तो इन्होंने सबसे पहले जो फ्री रेंज काउज होती है ना, फ्री ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड एवरीथिंग, उनके मिल्क से जो प्योर वे बनता है, ठीक है, दे स्टार्टेड इंपोर्टिंग. इनफैक्ट जब ये इंडिया में लेकर आए थे उस समय, और हमारी इंडियन कंपनीज को उन्होंने जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है फसाई वगैरह इनको दिखाया, तो उन्होंने बोला यार जब आपने यूरोपियन सर्टिफिकेशन ले रखी है हम हैं कौन. लिटरली ये वर्ड्स थे. दे आर दी मदर ऑफ ऑल सर्टिफिकेशन क्वालिटी वाइज. इवेंचुअली थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हुई, जैसे इम्पोर्ट ड्यूटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई इंडियन उस पर, तो अब वो दे स्टिल इम्पोर्ट फ्रॉम रॉ वे फ्रॉम जर्मनी एंड डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोप. ठीक है. एंड हेयर दे जस्ट एड फ्लेवर्स and they are also among the first brands ever to use 100% natural flavors.
Oh wow. So they made sure that they ethically the products which they're launching are very very high quality. Very So high anybody who is using these products, they generally don't shift to another brand because they know कि ऐसी quality नहीं मिलेगी. Like I'll give you an example. I gave Natural Teen to my kids, my wife during pregnancy. ठीक है, my parents, everybody takes it. It's so pure and so clean. Okay. So and Natural Teen जब आया, I remember I never knew this brand. They knew me through social media, but they were planning to pack up because Indians के दिमाग में डालना कि हाई क्वालिटी चीज़ भी होती है बहुत मुश्किल है. मुश्किल होती ये है. सही बात. Right sir. क्योंकि अच्छा फिर वो they are again just like me, they don't give discounts ऐसे ही. 50% off एक पे free. That is not there. Right. They're very ethical. हाँ जी, right sir. So I told them, don't worry. You have a great product, you have a great brand, and your ethics is what is most important. I'll help you. So from that day till today, I'm with Natural Teen. With Natural Teen. And sir, what about We Are Stupid? What's that? What's your goal and vision behind that? So We Are Stupid it's just it's a YouTube channel from which everything started. Okay. So I remember the name came. I was thinking of getting into YouTube क्योंकि मुझे YouTube का कुछ भी नहीं पता था कि होता क्या है. इसमें मुझे पता वीडियोस होती हैं. Yes, yes. ठीक है. फौज से बाहर आया तो मुझे समझ में आया अच्छा ऐसे इसमें YouTube में वीडियोस बनाते हैं. लेकिन द मोमेंट आई गॉट इनटू इट, इट वाज नथिंग टू डू विद मोनेटाइजेशन मनी. मुझे नहीं पता था. मेरा एम वाज कि जो नॉलेज मैं चाहता हूँ इंडियंस तक पहुँचे, जो एक्चुअल साइंटिफिक नॉलेज है, मिथ्स हैं, उनको बस्ट करने के लिए, उसके लिए बनाया था. एंड ऑल दी स्टूपिडिटीज विच आर गोइंग अराउंड इन सोशल मीडिया, उनको बस्ट करने के. तो आई वाज एक बार मैं आई थिंक हॉल में ना मूवी देख रहा था कोई ऐसी, एंड माई वाइफ वाज सिटिंग, एब्सोल्यूट रबिश मूवी. एंड Can you name? आई डोंट रिमेंबर, सच में नहीं पता है, ऐसी बहुत होती हैं. Yeah. ठीक है. तो एब्सोल्यूट रबिश मूवी. तो वो मैं उसको बोल रहा हूँ, मैंने कहा हाउ स्टूपिड इज दिस यार. एंड सडनली दैट क्लिक्ड कि हाँ, वी आर स्टूपिड, वी आर वाचिंग दिस मूवी. इट्स हू वी आर. Yes. It's And a I very just- catchy name. Yeah, so I just went outside the hall and I just registered that name, We Are Stupid. Actually, this was the story. हाँ, yeah, this is the story. Wow. Yeah, I mean, इतनी stupid movie वैसे time pass नहीं होता. I just went out and I just got the domain Yeah. and I registered the name. That's about it. That is really good, sir. And tell me something, sir. So, are you keen towards? Okay, so right now it's a time where people are having a lot of work. Whether it's me, I'm a 21-year-old guy. Whether it's her, a woman of 26, 27 years old, right? Or whether it's you, anybody actually. So, me as a person, I believe that. For example, if I want to learn about something, so it's very difficult for me to go to a doctor and learn, right? So what do you think about e-learning? Because if I have time, I'll simply just open something and see. So what is your take on e-learning? So sir, what are your takes on online e-learning platforms? Because our founders who are there, they're also health freaks and they are kind of working on something like that. So what is your take on that? So again, yeah, as the world has changed, we need to accept things the way they are, and things have changed for the better. If you have a stubborn mindset कि नहीं मुझे तो accept नहीं करना, it's your problem. But the world has changed and it will keep on changing. Keep on changing. So you have to adapt to it. Now e-learning is a beautiful thing. मुझे देखो, let's say somebody from 50s and 60s का era, for him थोड़ा सा मुश्किल होगा to study and read online. Right. Right. उसके लिए books और newspapers अभी भी important That है. will be important, right, sir? For my generation who has seen those times also, who has seen transition and what we are currently doing. तो लाइक करंटली जो भी मैं इफ़ आई एम राइटिंग समथिंग, अपनी बुक्स पे काम कर रहा हूँ या किसी और पे, तो आई एम नॉट राइटिंग, आई एम डूइंग इट ऑन द लैपटॉप. Right. तो अगर अब मैं ये स्टबर्न माइंडसेट लेके चलूँ, नहीं मुझे तो ऐसे समझ नहीं आएगा, नो, इट्स अबाउट लर्निंग. तुम कहीं से भी सीख सकते हो. ई लर्निंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यू फर्स्टली इट्स एक्सेसिबल टू ऑल दोज पीपल अराउंड द वर्ल्ड जो जनरली तुम्हारे पास नहीं आ सकते. Right. That's why you can spread your idea. That's how entire social media works. Social media works. YouTube पे भी जो अच्छे videos हैं, they are accessible to everyone. So Yeah. it's a I think, great thing. Yeah, I think works. Actually, I had a I question learned for many you. of the exercises from YouTube only. Yes. Seeing them, just practicing again and again. But do you think that YouTube, people from whom we learn, we don't know about their qualifications, we don't know about anything. We just know that, okay, this person looks good. And then we start following them. Do you think that is wrong or right? No, I think Okay, it is tell me about one the thing in research the also. in the real world also. अगर मैं YouTube हटा दूँ, तो स्कूल में तुम्हें कैसे पता तुम्हारा टीचर कितना अच्छा है? Yes. You just go to the school ना, you know it's a school, वहाँ पे टीचर्स हैं. अब धीरे धीरे तुम्हें पता लगता है यार ये टीचर इतना अच्छा नहीं है और सारे स्टूडेंट्स को ये कह रहे हैं हमें समझ नहीं आती. कई टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं. दिस इज हाउ इट्स देयर ऑन सोशल मीडिया. बट येस,
सोशल मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि जैसे स्कूल्स में तो टीचर्स की एक रेगुलेशन है कि भाई तुम्हें इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, ये है। सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं they है। have standards actually that Yes. you have to Yes. fulfill this. ये तो अब सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ नहीं नहीं है। है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, एटलीस्ट जिसके चैनल पर जा रहे हो ये चेक कर लो कि वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। Background क्या है, क्या एंड है। ऑल्सो अगर थोड़ा भी दिमाग होगा, इवन इफ यू आर थोड़ा सा सेंसिबल, नॉनसेंस कंटेंट सामने दिख जाएगा। दिख जाएगा। ये लुक, अच्छा फिर वो कंटेंट कंज्यूम करने वाला कौन है ये भी भाई मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता। राइट। भाई जिसने मेरा कंटेंट कंज्यूम करना है या कोई और चीज़ देखनी है वो देखेगा। किसी ने ज़िंदगी में ब्लॉग और वो सब टाइम पास करना देखना है, ठीक है, यू हैव सीन ऑल दैट Yes, of नॉनसेंस course. व्हिच Yes, sir. हैपेंस। Yes, sir. Of course. Sometimes it depends on your upbringing also, the kind of knowledge which you acquire. it It is also very important. इट इज एक्सेसिबल ना, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है कि सोशल मीडिया कौन यूज़ नहीं करेगा। True. सब कर सकते हैं। तो उनकी चॉइस अलग है और वैसा कंटेंट भी बन रहा है। बट यू हैव टू बी केयरफुल कि तुम्हारा एम और लाइफ में आगे क्या करना है। Goal क्या है? So my question to you is that is it safe for a female to have a six-pack abs? Although thinking that in coming future she has to get pregnant. So comparatively female has to have more fat than men. So what is your opinion on that? Good question. So firstly, answer is absolutely yes. Okay. A female, if she's having a six pack, ठीक है, there is absolutely no problem in pregnancy or anything. That's a big myth, let me tell you. क्योंकि ये लोग वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिनको एक्सपोजर नहीं है स्पोर्ट्स का। प्लीज गो टू एनी स्पोर्ट्स फील्ड, go to track and field, go to any other, you will see females phenomenally fit, right? Athletic. They're top Very athletes. They are able to deliver babies with much more ease than 90% of the females who are struggling with weight issues. And in fact, healthier babies, I can. Healthier babies, strong babies. The genes pass. Genes pass, ठीक है? yeah. Second is इसमें प्रॉब्लम एक क्लॉज तब आता है when you achieve six packs with artificial methods. When you starts injecting, जो I am actually a person who's against female bodybuilding. Okay. Right. That's a very bold statement. Yeah. That's actually a very bold statement. Yeah. I'm about to put a video on the same topic. I'm not. Look, female bodybuilding doesn't mean lifting weights by female. That is not bodybuilding. I'm talking about competitive female bodybuilding. Okay, I get it. Now. Yeah. I get it. So, and I'm absolutely okay with figure athletes, fitness athletes. Great. The moment a female gets into competitive bodybuilding level, All you know, anabolics and all you're talking about. एनाबॉलिक्स तो देखो थोड़े बहुत वो भी ले रही हैं, हाँ. जो लड़कियां उसमें हैं, हाँ. लेकिन बॉडी बिल्डिंग लेवल पे ना, जहाँ पे तुम देखो बॉडी बिल्डिंग में अलग अलग लेवल्स हैं। सो देयर इज अ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग लेवल, देन यू हैव फिजिक एथलीट्स, फिटनेस एथलीट्स, हर एक अपना वो है। क्लासिक फिजिक्स होती हैं, फीमेल्स में भी वैसे ही। Yes, sir. लेकिन वो जो बॉडी बिल्डिंग मेन वाली बॉडी बिल्डिंग है ना, आपने देखी होगी जैसे इंटरनेशनल एथलीट स्पेशली जो फीमेल बॉडी बिल्डिंग में एंटर करती हैं, वो दैट इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग फॉर अ फीमेल, वेरी डेंजरस एंड वेरी हार्मफुल। देखो हम ये नहीं बोल सकते कि यार मैं फीमेल हूँ मैं मेन के साथ compete करूंगी, या मैं आदमी हूँ मैं वुमेन के साथ compete करूँ। स्टूपिडिटी। Actually. यू आर नॉट डिजाइन फॉर दैट, यू विल हार्म योर फिजियोलॉजी। ठीक है, मेन हैंडल कर सकते हैं, तुम नहीं कर पाओगे। और बहुत सारी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो मेन नहीं कर सकते। देयर इज नो कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन। तो उस केस में जब लोग फीमेल्स ऐसा करती हैं अपने साथ, अपने को स्टार करके इंजेक्टेबल्स के साथ, तब दे व्हेन दे गेट दैट सिक्स पैक स्पेशली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, then problem up. They keep on actually abusing their body with the artificial things. Otherwise, if you're an athlete, you're strong and you're getting lean, और उसके साथ सिक्स पैक्स आ रहे हैं, इसमें टाइम लगता है, सालों लगते हैं, then it's a great thing. Sir, don't you think these days social media is very toxic in terms of fitness? It's toxic in terms of everything. Yes. Any topic you take, you will find अच्छे लोग 10 to 20% जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, 80% कचरा. You have to filter it out. As a woman, this is a very complicated question. Like I am training my entire body. I do push pull legs, high intensity and hypertrophy. Okay. ठीक, तो I train my body in a very proportionate way. Okay. So if I am posting just my glutes photo or glutes videos, so what is your take on that? I'll give you good views. और क्या होगा उससे? कुछ नहीं Exactly. होगा। Because this is what ये क्वेश्चन तो सारे के सारे But जो don't you think still in India the female bodybuilding is not taken as seriously as it is taken on a global platform? Still. इंडिया में ना लोग ना जज बहुत करते हैं। एक तो हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ वो रिश्तेदारी वाली बीमारी बहुत ज़्यादा है।
फॉरेन में ऐसा नहीं है, दे डोंट जज यू, यू आर ऑन योर ओन. देखो वहाँ पे 18 साल में 17 साल में पेरेंट्स विल किक यू आउट, गो लिव योर लाइफ. एग्जैक्टली. So they will help you. ऐसा नहीं बिल्कुल कट ऑफ नहीं हो जाते, but then you are on your own. So people are not too much interested in what he is doing or what you are doing. They don't care. Go and work out internationally. And this is what I tell people on social media, especially these cartoons जो कमेंट्स कर रहे होते हैं फालतू के किसी एथलीट के ऊपर, उसके ऊपर, अरे तूने ये किया वो किया. Right. They are क्या बोलूँ उनके लिए, लेकिन प्लीज गो आउटसाइड इंडिया. ओके. इन वट एवर फील्ड यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर, लेट्स से फिटनेस में करना है, वहाँ पे जिम में जाके जरा वर्कआउट करो. वहाँ तुम्हें एक मैं ना वर्ड बोलता हूँ, जैसे आई एम सॉरी टू यूज, प्लीज. एक तुम्हें ना कुत्ता भी नहीं पूछेगा वहाँ. क्योंकि सब इतने कंपेटिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे वो अपने. फर्स्टली वहाँ जिम्स में नोबडी केयर्स व्हाट यू आर डूइंग, यू गो किल योरसेल्फ, नोबडी केयर्स. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द क्लोथिंग सर, जैसे मैं यहाँ पे वर्कआउट करती हूँ, आई एम जस्ट गिविंग अ बेसिक थिंग. अगर मेरी बॉडी अच्छी लग रही है, मेरे कोर्स अच्छे हैं, मेरे बाइसेप्स अच्छे हैं, मेरी बैक अच्छी है, मैं सिर्फ अपने लोअर बॉडी की बात नहीं कर रही क्योंकि मैं फीमेल हूँ, मैं ओवरऑल अगर मैं स्पोर्ट्स ब्रा शॉर्ट्स पहन के भी जा रही हूँ तो इट्स नॉट जस्ट दैट आई एम गोइंग देयर फॉर अ मेल अटेंशन. मैं नॉर्मल, आपका इस पे क्या है कि नहीं, इसके लिए I'll tell you I'll tell you what is the problem here. See, you cannot change perception of people suddenly. There is always a cultural mindset. but it is very slow process in India देखो, actually. no, it's not in India. Okay. बहुत सारी दुनिया में हर कंट्री का कल्चर अलग है. अच्छा. अमेरिकन कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट. उनका अपना वैसे कल्चर ही नहीं है, वो सब मिक्स एंड मैच है. ठीक है. अमेरिका इज लाइक दिल्ली, सारे आए हुए हैं एक ही जगह पे. समझिए. देयर इज नो, यू कांट से कि ये दिल्ली वाला इस कम्युनिटी का ऐसा नहीं है, सारे आगे, तो वो दैट इज अमेरिका. आई एम टॉकिंग अबाउट कल्चरली स्ट्रॉन्ग पीपल. जैसे इंडिया इज वेरी कल्चरली स्ट्रॉन्ग वो, तो हर एक कल्चर का अलग वो है. यू गो टू मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, यू गो टू यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, ऑल दीज प्लेसेस, टर्की, वहाँ का कल्चरल एस्पेक्ट अलग है भाई. जैसे कि ईरान में इट्स कंपल्सरी फॉर फीमेल्स टू वेयर द हिजाब. नाउ अब ऐसा नहीं है कि वो जिम्स नहीं वो कर रही है, यू सी दे आर वर्किंग आउट, बट उनको हिजाब पहनना कंपल्सरी है. तो वहाँ के रूल्स अलग हैं. वहाँ पे जाके तुम जेम्स बॉन्ड बनोगे कि भाई मैं तो नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा, मैं तो इनके रूल्स. तो फिर तो यहाँ पे भी ऐसे ही है. लेट्स से मैं एक नॉर्मल फैमिली से आ रहा हूँ, जो एक मिडिल क्लास फैमिली, और हमने इतने सालों से अपने घर में लेडीज देखी हैं, किसी को भी देखा, अपने फ्रेंड्स को भी, दे आर वेयरिंग अ सेट ऑफ क्लोथ्स. सडनली सोशल मीडिया पे क्या हो गया, चीज़ें ना बहुत एक्सपोज हो गई हैं. राइट. अब वो चीज़ें ना इतनी जल्दी डाइजेस्ट करना, वो जो कल्चरल शिफ्ट हुआ ना सोशल मीडिया से एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है. अब मैंने लड़कियां जो है ना, देखो इसमें गर्ल्स आर राइट ऑल्सो, रॉन्ग ऑल्सो. अब बाय आर दे राइट, दे आर राइट के यार तुम लड़कों को चेक करो, अपनी आंखें वो रखें, चेक में रखें. टू एन एक्सटेंट यस, बिल्कुल. क्योंकि भाई यू शुड बी सेंसिबल इनफ कि इफ अ गर्ल इज वियरिंग समथिंग, यू नॉट सपोज टू ऑगल एट हर. ठीक है, लाइक अ इडियट. ठीक है, जो रेप्स हो रहे हैं उसमें देयर इज नो जस्टिफिकेशन. सर, देयर इज अ डिफरेंस in admiring someone or lusting over someone. Exactly. Agar if you are looking at me or if he is looking at me कि Aanchal is looking good, एक वो होता है कि she is wearing nice clothes, she is looking pretty. एक होता है that you are just looking at her like a lump of flesh. That is a different thing. वो भी दो रीजन से होता है कि जैसे मैंने बताया, तो कल्चरल हमारे बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है. सडनली जब इतनी चीज़ें दिखेंगी तो क्या होगा, दे गो क्रेजी नो. ठीक है कि ये क्या हुआ. ठीक है. अच्छा, इसमें लड़कियों की गलती मैं कहाँ पे मानता हूँ. देखो, टेल मी वन थिंग, इफ आई एम वेयरिंग अ बिकिनी इन अ मैरिज, what will people you are dumb, you are stupid actually. You are making a fool out of yourself. So I tell always females कि stop being जबरदस्ती का फेमिनिज्म मत दिखाओ. देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंसिबिलिटी. तो अगर कोई आदमी जबरदस्ती का मैस्कुलिन बन रहा है, ही इज आल्सो एन इडियट. एंड इफ जबरदस्ती की फेमिनिज्म दिखा रहा है, दैट्स आल्सो स्टुपिडिटी. फेमिनिज्म ये लोग बहुत गलत ले गए हैं कि छोटे कपड़े पहनना, सिगरेट शराब पीना, मतलब आई एम बीइंग वेरी, आई टेल यू. सो कल आई वाज विद माय किड्स इन वन ऑफ द आई मीन it's not a mall, it's like an open area in Gurgaon, and I take my kids there. They play and I study. मतलब ऐसे in a coffee shop till the time they play. तो मेरे लिए अच्छा हो जाता है. अब imagine I'm अपने बच्चों को ऐसे घुमा रहा हूँ and they are kids 6 years old. ठीक है. Now imagine a female comes in front of me. The girl must be, you could judge from the कि she's either teenager, मतलब in 18, 20s or early 20s something. Now she is wearing a shorts in which almost 30% of her hips are visible. इतनी सी शॉर्ट्स होगी वो. Translucent sort of. नो पूरी bare legs. Okay. ठीक है. वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट होती है मिनी और फिर बहुत ही छोटी शॉर्ट्स. वेरी टाइट द क्लोथ विच शी वाज वेयरिंग, वेरी टाइट. हाफ ऑफ द एंटायर स्टमक वाज वो, द क्लीवेज वाज विजिबल. प्लीज टेल मी, इफ यू वांट टू वेयर सच क्लोथ सो दैट पीपल सी एंड देन दे सी यू,
तो अब क्या करें इस केस में भाई, why are you wearing such nonsense clothes? Do you understand? And let me tell you, this is not Western influence. Exactly. The most dumb thing which people are telling now, this is not Western influence. Which country have you traveled? Go to Britain and see how beautifully females dress. Exactly. Go to Europe and see how beautifully they go to Australia, go to US. Nobody dresses like this. This is a stupid cultural latest that Gen Z wala concept which Gen has Z come on concept. social media. Right. This has nothing to do with This class. is a toxic empowerment, Yeah. actually. So ये कोई In a तुम्हारी very negative class way. education नहीं है इसमें. I haven't seen in Britain. In my wife is a solicitor. She has a first office in London. Oh wow. I haven't seen any British guy or a female roaming around like this. Like this, yeah, of course. Even if, believe me, even if they're wearing shorter clothes, they will carry it so beautifully. So So beautifully. gracefully, Yes. actually. with यहाँ पे grace. what females are trying to do is they're trying to show off कि देखो हम छोटे पहन रहे, please look at me. It's Please, like यहाँ grab wannabe. attention. Wannabe. वो जो grab attention वाली प्रॉब्लम है ना, वो बहुत डेंजरस है. YouTube पे और सोशल मीडिया पे वो बहुत ज्यादा है. बहुत ज़्यादा है सर. तो ये जो ग्लूट दिखाने वाला बीमारी चली हुई है ना फीमेल्स को, एंड लेट मी टेल यू, मुझे भी बहुत किसी गाली के कोई पड़ेगी, ग्लूट्स पर नहीं है. मैं बोल रही हूँ. इनमें से किसी के ग्लूट्स नहीं है. गो टू अ ट्रैक एंड फील्ड, एक स्टेडियम में जाओ और जो लड़कियां ट्रैक एंड फील्ड करें, उनकी स्ट्रेंथ देखो जाके, Exactly. See the तुम्हें पता लगेगा ग्लूट्स क्या होते हैं. अगर ग्लूट ही देखने हैं तो तुम्हें, मसल क्या होता है? वो एक्चुअली मसल होता है. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, दे आर जस्ट वो टोटल व्यूज एंड फॉलोअर्स गेन करना. ठीक है, और वो फॉलोअर्स और व्यूज भी वैसे ही होते हैं जैसे लोग हैं वैसे ही. Sir, you know- क्राउड होता है ना सर, टॉप टियर 1, टियर 2, टियर 3, तो फिर उससे वही क्राउड आएगा. Yeah. Sir, do you know about OnlyFans? नहीं, you got this? No? No. Okay. That's a little off topic. Off topic, but I would love to know his opinion on that. What is only? Because नहीं, he I can just see. I will tell, sir. मैं I will बस ये tell, बोलना sir. चाहूँगी कि आपके जैसे कि your projection is very strong. What should be I've like that. observed for you. It should be like that. It is very strong, and you are a very होता है ना sharp guy, and you know what to speak, and it's like I will not entertain any kind of bullshit. So as my colleague over here said, OnlyFans where they sell their photos. All the No, I time. will What tell is you. that? It's like okay. Sell So their OnlyFans photos. is Sell a their- company in US. Okay. Yeah. Okay. What happens there is, okay, girls, just women. Okay, and even men, like just 1 or 2% maybe. So what they do is, because there are a lot of I would say creep men in the world, a lot of them. So what they do is they take pictures of themselves and they sell it there. And that is a What type of pictures? pictures like hot pictures, sexy pictures, and then send. It's a glorified porn site. Yes, no, not Yes, properly he was porn. hesitating to say Not- that, but no. you Sir, just it's said not it. it's not a porn site. It's a you sell your images, sir. That's it. It's not You porn sell and images. basically you sell your Okay, nudes. It's that. let me. That- That's what that I'm is the trying. word. I said it's a glorified porn site. Yes. It's not a porn site. They will never categorize it under porn or soft porn. Yeah. Yeah, ठीक है, soft they porn, will you can say. categorize it under something very different Yes. to market it Yes. to everybody. Yes. ठीक है, but ultimately what you are telling me, I have not seen it क्या है. तो लेकिन what you are saying basically कि हाँ. in my generation, I'm 21 years old. Yeah, so it is. I see all these things. Yeah, so it's basically glorified soft porn and थोड़ा सा और एक step नीचे ले लो. Yeah, and they are, the point is, sir, that the women are very proud. They are going there and becoming a millionaire, billionaire, and they're coming up and saying, oh my God, I did my own thing. So I don't think that is respectful. So what is your take on that? ओके सो एक तो ना आजकल मुझे ना ये चीज़ देखो, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Of लेट मी course. अगेन टेल यू, Yeah. ऑल दीज पीपल हु आर टेलिंग अरे नहीं पैसा नहीं, शट अप, हाँ, money is important. प्लीज yes. अंडरस्टैंड. Yeah. Money ठीक is है. important because money gives you freedom to take decision and walk out of any situation. Yeah, but then equally important, which of course has died in a lot of cases, is ethics. Ethics. राइट. अब तुम अपने एथिक्स को कितना कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, ये तुम्हारी चॉइस है. फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ पीपल, एक पॉर्न स्टार है भाई, प्लीज लेट मी टेल यू, शी इज 10 times more respectable than all these females who are trying to be half porn stars, but they're stuck somewhere in the middle. Amazing. They have accepted the fact Of that we are course. porn stars, Yeah. and we know the art, of seducing individuals. People get attracted to us, and we are open about it. Hypocrisy कहाँ पे होगी कि नहीं मैं porn star नहीं हूँ, but I'm doing almost everything just one step short. One step short. They own it actually. Right. It's Right. like Very that. true opinion. It's मैं such सुना a है अभी good ये. thing, sir. It's a very good thing you Hats said. off. Right. So Hats now off. if somebody says Sunny Leone, look, I am against Sunny Leone's acting skills. That she's done इतनी Yes. अच्छी skills नहीं है. Yes. We have great actresses out there, but Yes. I'm not against Sunny Leone. भाई, Yeah. तो उसको, how do you know Sunny Leone? How anybody knows Sunny Leone? Through two things. Because she's a porn Movie and star. She yeah, was a both. porn So star. इसका मतलब Then है she came anybody here. who knows about her, उसके बारे में बात कर रहा है, सबने उसकी porn videos देखी है ना. And porn videos are there, ये तो बोल नहीं सकते, ठीक है.
जब वीडियोस नहीं होती थी तो पहले मैगजीन्स होती Magazine होती थी। Magazines होती थी। हमारी जनरेशन को तो बहुत ही क्लियरली पता है यार, वी हैव सीन दैट ट्रांजिशन, ठीक है। तो अब लेकिन यू कैन नॉट यू नो रिफ्यूज दीज थिंग कि नहीं होना ही नहीं चाहिए, और ये दैट इज नॉट हाउ वर्ल्ड वर्क्स। हाँ, होना तो नहीं यू हैव टू चाहिए, फर्स्ट एक्सेप्ट इट। Yeah. तो प्रॉब्लम आती है हिपोक्रेसी में, जहाँ पे व्हाट यू आर सेइंग ना, सो दिस I was ओनली about to फैंस एंड दिस फैंस, व्हाट यू जस्ट टोल्ड मी, आई एम नॉट सीन द वेबसाइट, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर ग्लोरिफाइड सॉफ्ट पॉर्न साइट्स। यू वांट टू सेल योर हाफ नेकेड और फुल नेकेड पिक्चर्स टू अ प्लेस एंड इट इज एक्सेप्टिंग दैट पिक्चर्स, लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं पॉर्न साइट नहीं हूँ, वो अलग होता है। तो ठीक है भाई, तू कोई और कैटेगरी बना ले, लेकिन अल्टीमेटली इट इज द सेम, नो? Same, of course. सर आपको नहीं लगता जैसे कि अगर सपोज और भी लड़कियां हैं वो अपनी सेक्सी फोटोज डाल रही हैं या ग्लूट्स दिखा के व्यूज लेने की कोशिश कर रही हैं, तो ऑडियंस भी तो लड़के ही हैं। नहीं, ऑडियंस अगर सारे अगर हैं। आप किसी लड़की को, जैसे सपोज अगर आप किसी लड़की को गाली दे रहे हैं, गलत शब्द बोल रहे हैं, यू आर वर्ड यूज कर रहे हैं सपोज, तो इतना सब कुछ समय बर्बाद, इतना टाइप करके लिखने से अच्छा है कि ब्लॉक कर दो अगर पसंद नहीं है तो। इस पे क्या है? या सो देखो, जैसे मैंने बताया ना कि जो कल्चर, जो लोगों का माइंडसेट है, कल्चरल माइंडसेट है, वो हर एक का अलग है। हम हर एक को चेंज नहीं कर सकते। आप एजुकेट कर सकते हो, वो स्कूल से शुरू होता है, ठीक है। जैसे अब इट्स हाई टाइम्स के स्कूल में जो एजुकेशन पैटर्न है, दे नीड टू चेंज, क्योंकि द वर्ल्ड हैज चेंज। वी नीड टू रियली एजुकेट किड्स अबाउट सोशल मीडिया एंड लॉट ऑफ थिंग। इन फैक्ट देयर इज आई थिंक I heard about this thing. Most of the countries around the world are now taking a decision to ban all computers, everything from the school, and they're getting back to textbooks. Which is lovely, actually. They're all. I Which think is a lot of lovely. countries have done this also. But you know, when it comes to social media, अच्छा second क्या देखो, social media जब आप बोल रहे थे जी। looking at girls, जी भाई why are girls coming? Why are they trying to show off everything? ठीक है, बिकॉज उनको पता है कि वहाँ पे लड़के हैं एंड दे आर गोना लुक एट मी, और उससे मुझे व्यूज मिलेंगे। जो देख रहे हैं उनको भी पता है भैया हमें तो मजा आ रहा है इसको देखने में, तो इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसमें किसको मैं किसको ब्लेम करूँ? किसको? हाँ, ओके। अब आप ये बोलोगे वो लड़की क्यों देख, तो भाई तू क्यों देख रहा है? दोनों देख तरफ भाई, है ना, दोनों ताली तरफ दोनों होता तरफ है। से बज तो रही उसको है। गाली मत दे। अगर तू देख भी रहा है, एंजॉय भी कर रहा है, एंड देन यू आर उसको गाली भी दे रहा है लड़की को, अमेजिंग है यार, ये कैसा चलता है? Right. डोंट वॉच इट। एक क्वेश्चन है फिटनेस से रिलेटेड, जैसे कि सर एज अ वुमेन यू शुड ट्रेन योर एंटायर बॉडी एक प्रोपोर्शन में, कि एक प्रॉपर शोल्डर किया, चेस्ट किया, लेग्स किया। ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां सिर्फ लोअर बॉडी पे फोकस करती हैं, पूरी बॉडी क्यों नहीं ट्रेन करती हैं? और हमारे आज भी हमारे पेरेंट्स हमें ये कहते हैं कि प्रोटीन पाउडर मत खाओ। व्हाई सो? Okay, so why women love to train lower body and why men love to train upper body is because both are sex symbols. So for men in India, the biggest problem and the very negative जो चीज़ें थोड़ी better हो रही हैं is not training the lower body. India में men suffer from a problem called chicken leg syndrome. Yes sir. Right. And I make fun of such kind of men. Yeah. Actually. So thankfully being in track and field and all, we realized these things much earlier because हमारा सारा body lower body workouts होते थे. जी. So I was a long jumper just like my mom. Okay. ठीक है, तो हमारा सारा lower body workouts थे. In fact, I won most of the competitions for the simple reason that my lower body was way better than most of the guys in the It bodybuilding. was like strength and everything. Yeah, muscularity and everything, right? For females, it is the other way around again. Why? Because female strength training has now come up. ठीक है, तो उनके लिए जो सेक्स सिंबल जिससे उनको व्यूज अट्रैक्ट मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहा है, वो लोअर बॉडी है। अटेंशन भी कहीं ना कहीं रियल लाइफ में भी। बट द मोमेंट अ फीमेल अंडरस्टैंड्स और अ मेल हु इज अ सेंसिबल पर्सन, बोथ ऑफ देम, कि भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इस तरह करी जाती है, उसके ये बेनिफिट्स हैं, और बॉडी को इस तरह ट्रेन करना है, दे नॉट डू ऑल दीज नॉनसेंस थिंग्स। True. Sir, you have authored over 55 books and more than 100 articles on, I think, fitness and nutrition. Yeah. So, which one do you think is the one mostly connected to you? Which book? And which one is the best selling? What people love? So I still don't have a best-selling book, because for me, initially when I started writing books, I wrote couple of books, then I had problem with the publisher, कुछ issues हुए थे, and then I totally stopped writing paperbacks. ठीक है, then I started writing e-books, and all my e-books are there on my website vstupid.com, and they're all free. They're all there. All free for everyone. They're They're all short free? e-books. Yeah. For me यार क्या हो रहा था कि I could not write on one topic for a very long period of time. For me, if one video उसके साथ या तो article होगा या e-book होगी. Right. With all research studies and all. This is how I used to write. Right. ठीक है. I initially जब इंटरनेट इतना सोशल मीडिया नहीं आया था, तो उस समय तो I used to write articles for a lot of magazines, websites, everything. धीरे धीरे ये चीज़ें ऑटोमेटिकली अब खत्म ही हो गई हैं, ब्लॉग्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा Which होते one हैं. is your favorite?
सो ऐसा कुछ नहीं यार, वो टॉपिक के ऊपर है. एवरी टॉपिक जैसे आई Some book which you think that which will help the youth. that is gonna come very soon. That's going to come very soon. So I am working on a series of books, and that will be primarily based only on clearing myths and facts. So all these hundreds of myths which people have, weirdest of the myths in fitness, health, nutrition, strength, everything, वो सारी उसमें clear करूँगा. I have filtered around 350-400 plus myths, and I'm writing on that. So So when am I expecting this, sir? I'm a huge fan. some time more, because I'm not gonna just publish it the way I used to do it before. I'm gonna reread, refilter, edit. Maybe Edit all this. it'll take time, but I'm material is there. I'm just rewriting everything. Where do you focus on in your books? Mostly the right and wrongs. In this topic, the one I'm writing right now is on rights and wrong. But then I have a book which I wanted to publish. It's called Born to Move. Born to Move. Born to Move. Born It was Wow. a very I love the title. yeah. So very it's a nice. caption of for my next post. Born to move. So वो book publish कर नहीं पाया because again यार मेरा ना सारा I mean I have two hands. तो वो सारी energy was going towards business, developing products, researching on that, videos here, there, new brands, new launches, multiple podcasts, news channels, and with family. I have twins. तो उनके साथ it's How old are they? Lovely. so there's 6 son and a daughter. Yeah, Wow. yeah. So उनके साथ time, with family, so it gets very difficult. So all my writing and everything now थोड़ा बहुत goes in the night. I Now it goes in the rarely night. sleep generally रात को नहीं. You're a very talented person, sir. So where this writing skill came from? यार I remember writing skill नहीं था. एक बार ना हम जब when I was flying in my posting in Baroda, Yeah. so I was sitting in and everybody in the Air Force knew back then that okay, this officer is passion is fitness. So if obviously in the forces when there is one officer or one man or anybody who is talented in one thing or who has a different passion, वो थोड़ा limelight में आ जाता है. आ जाता है. तो उनको पता था ना. And I was one guy who was going around in the forces in different stations to give talks and lectures. बहुत सारे उसमें तो lot of people knew me. तो one of my senior wing commanders, I think wing commander Vishal Gupta his name was. We were sitting in a crew room. हमारा जो pilots का crew room होता है, sitting there and he was sitting कहता है यार, he used to call me Chopi. I mean चोपड़ा को जाए Yeah, Chopi, yeah. ठीक है. Friend. The nickname ऐसे है. nicknames होते हैं सब. Yeah, nicknames, Chopi, why don't you write a book? Yeah. मैंने कहा sir, I have no idea of writing. कहता you had no idea of bodybuilding, you did it. Go for makes it. You sense. have a good book. Then I wrote my first book. Of course, I hate all the books I wrote because I thought कि यार वो editing part could have been way better. But that's how you learn, right? Makes sense. So, but that's how I got into writing. And उस समय राइटिंग की ना एक वैल्यू भी थी, मतलब क्योंकि उस समय वीडियोस बहुत रेयर होती थी तो. लेकिन अब तो ऐसा लगता है यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू Very राइट specific, right? Sir, I myself am a fan of people who serve for the nation because of a lot of things. First, of course, they serve for the nation. Second, they're very disciplined. The way they sit, the way they talk about yourself right now. Like you are straight. Body language and everything. Body Chris. language and facial expressions, the way you talk, the way you explain things, the way your hands are or the way your legs are, the posture, everything combined, I feel like it gives a man a manly look. ओके. So how do you think people like me who have not been to army ever, have not experienced anything like you have, how can I adopt or what changes can I make in my personality or my discipline or somewhere where I can, be that disciplined and that not stubborn but Very confident, I think. confident plus Confident. the body language plus everything else. Yeah, it takes time. So there are people who say that you can, read books and watch videos and learn that art of communication or, table manners and all those things you can learn. In defense forces, we are taught everything and in a very hard way. So when, for example, let's say marching, right? अब इतनी drills करी, इतनी marching करी, and the way we sit in our dining rooms and the way we have our, even there are, we won't call it parties, general parties भी होती हैं, but then there are dine-ins wherein you are wearing a very different kind of a uniform, ceremonial uniforms, and you're sitting and eating also in a very particular way. That's also uniformity comes in. So those things are taught. So eventually over the years that thing gets ingrained in us. ठीक है, किस तरह से बैठना है, बात करना है, way to. We all make mistakes, जैसे सब करते हैं. Everybody is different. फौजीज में थोड़ा ज़्यादा करा जाता है. तो अब मैं पूरी ज़िंदगी 14 साल जब मैं ड्रिल ही कर जा रहा हूँ तो वो स्ट्रेट पोस्चर हो ही जाता है यार एक थोड़ा सा. राइट, फिर स्पोर्ट्स भी रहा है. राइट. Any I would say 4 tips
one word, single word, which you would want to tell the youth that this is how you can be disciplined or Especially look like to a man. Gen to Zs. Gen Zs, the youth. And to me also, please tell it to me also. Okay. First and foremost, before everything else, please have a goal. Everything in the life starts from a goal. If you wake up in the morning with nothing in your mind, it makes no sense to have an existence. Till the time you die, every day should be a day where you wake up with something. Just you call an ikigai in Japanese, or any other word you want to give it, but you should have a goal in mind. Goal in mind. When you wake up, you should be super excited for the day. So number one is goal, guys. Remember, Absolutely. yes. Right. Next is, when you form a goal, then you have to design a blueprint. How to reach that goal, Structuring it out. Strategy. Yeah. right? So you call strategy or structure or blueprint to reach that goal, or basically you design a map how to reach it. The next thing is, now the most toughest part comes is the execution part. This is where most of the people fail. It's not difficult to have a goal. You can even design great blueprints and all, but the toughest part which comes is when you start executing. That's why you'll see January mein there's a lot of bheed in a gym, but in February Almost everybody engaged. fades out, Yeah, of right? course, of And same happens with everything. All new resolutions go out in 1 or 2 months. Right. Because uska sabse bada reason is because we forget one simple word which we have never been taught about is pain. Anything which you try to do in life, which is worthwhile, it will be painful. It is not going to be easy. And irrespective of anything you do. Every person who has achieved anything in his life has gone through tremendous pain. Right? But the problem is, people who achieve, they do it despite of the pain. You somehow have to accept it that pain hogi, because anybody trying to tell you with false motivation, ऐसे होगा, कुछ नहीं होगा, दर्द होगी, क्योंकि मैंने कितने लोगों को बोला, मैंने होगी मोटिवेशन ले ली. When you do a push up on the ground, that is what matters, because pain वहाँ होगा. तब सारे ideas निकल जाते हैं, right, sir. Right? So the thing is, you need to accept it. It is going to be tough. It is going to be painful. Goal, strategy, and execution. And accepting the pain part. Accepting the pain. And number 4, and very important, please black out the bullshit. You will not be able to achieve anything if you start listening to hundreds of people around. Right. And the most important thing to black out this, people also get confused कि यार किसकी सुने, हो सकता है वो ठीक हो, नहीं, वो ठीक तब तक नहीं होगा जब तक वो उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है. If you want to take advice, you want to have a mentor, you want to listen to somebody, ask somebody, please check whether this person has experience in. Today if somebody says that, sir, I want to be your mentee, okay, and I want to train under you, please teach me about stocks. I'll be the most foolish person to say so, because I have no idea of financial markets. Right? I need to accept it. But the other person also should think कि जब मैं किसी से advice ले रहा हूँ, किसी को follow कर रहा हूँ, क्या वो उस field का expert है? अगर नहीं है, please don't take too much advice from him. And this includes your own parents. It's not, parents are not bad, but they're not specialized in that. Right. ठीक है, उनको समझाना कि आपकी ड्रीम्स क्या हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट. दे आर नॉट थिंकिंग बैड फॉर यू, दे ऑल्सो वांट यू टू बी प्रॉस्परस एंड ऑल, बट कुछ समय के लिए जब तक तुम प्रूव नहीं कर देते कि आप टू ब्लॉक एवरीबडी फ्रॉम योर ऑल योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हु आर ट्राइंग टू पुट यू डाउन और बी अगेंस्ट योर आइडियाज. So do you have an ideal routine to be disciplined? Even I want to know that. To get up in the morning Any and morning do this, routine and don't use your phone, something like that. People do have routines. For me, it's not that type of a thing, because there are too many things, and I am not a morning person. I'm a night person. Okay. It's been not a good thing for me. I'm trying to cover up my sleep, but in last, I think 2017, 18 ke baad, yeah, it's been 5 years, 6 years. I haven't slept in the night. I sleep in the morning 5, 6. How many years? 5 से 6 साल हो गए हैं. Wow. Yeah, because everything which I wanted to do with my family and kids and everything and all the work, I could not focus. सुबह क्या करूँगा मैं? सुबह everybody is around, there too much of noise, I have to be here, there, everywhere. तो मैं actual चीज़ पे कब काम करूँगा? If I want to write on something, research on something, ठीक है, वो सारी planning and everything happens in the night. What would you suggest the youth? The ideal routine to be in that 1% club? No, there is no ideal routine. No. You are an individual. Please design a routine for yourself. This is the biggest problem again on social media which is going on. सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, इतने बजे ये करो. You need to be absolutely super rich, doing nothing in your life to follow such routines. Right. If you have the luxury to do it,
प्लीज यू आर वेलकम. अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठ जाता है. डिड यू लिसन टू अक्षय कुमार व्हाट ही सेज? ही क्लियरली सेड ये मैं अब अफोर्ड कर पाता हूँ. जिस समय मेरे स्ट्रगल के डेज थे उस समय मुझे भी नहीं पता था मैं रात को. आई हैव मेट एक्टर एक्ट्रेसेस सो मेनी ऑफ देम यार, उनकी हालत खराब होती है, रात रात भर शूट चल रहे हैं. अब वो क्या बोले, नहीं मुझे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है बिकॉज इस स्टूपिड यूट्यूबर ने बोला था. ऐसे नहीं होता है. नहीं होता है. either you don't have a dream, your papa ji has a lot of money and you can sustain, please do what you want to do. Otherwise you will have to compromise on certain things. No, very right, sir. So have you ever fired arms? Lot of them. Lot of them. Have you ever what was your favorite, I would say, gun or favorite weapon? So in Air Force we do only practice firing, directly to wo nahi hoti, but lot of practice firing. Yeah. So LMG was my favorite. LMG. Light machine gun, the isne Sunil Shetty wali, the border wala. Yeah. सर मुझे टर्मिनेटर वाली याद है, वो That gun. शॉटगन. That gun, it's a very smooth gun. It's a smooth gun. I mean INSAS is good, the common weapon we have. What do you think in terms of the technology in this Air Force, Indian Air Force, IAF, and technology outside? If you compare the weapons, the ammunition, the technology they use, So how advanced they are from us? If you, for example, if you talk about US. So I'll tell you what happens is in the last so many decades of fighting and wars and different, if you study, no, of course you need the technology. Just हम तो सारे operation में भी देख ही रहे हैं. But somewhere down the line you also see that it's not just the technology which comes into play. Wars are not won by technology; they're won by men. Yes. ठीक है. So you have to have the most advanced weapons. Our army is going great. We are upgrading. We need a lot. Right. Navy is going very good, which was very slow and supposedly should be the best. अब होनी चाहिए, हो भी रही है. Air Force is still slow. We are lacking fighter strength. कब से सबको पता है. We need to really get the fighter strength up. ठीक है, ये हमारे challenges हैं. लेकिन पिछले 10-15 सालों में, मैं अगेन बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है 2013 के बाद, the modernization has happened very rapidly and very much needed. Very much needed. So if I want to be a pilot, then what is the procedure? I love this since I was a kid, but I have been doing different things. But what do you think is the correct procedure if anybody watching this podcast or even me wants to be a IAF? Okay, so if you want to be Pilot. IAF, so then there are again multiple avenues to get into it. Either you get through NDA after your school, or CDS, or you get through Short Service Commission, OTA वगैरह है, और भी entry schemes हैं अब तो ये सारी schemes available हैं. Is it something like कि हमें maths ज़रूरी है, हाँ. 10th में होना, 12th में होना? Yes. मैथ्स और साइंस भी जरूरी है शायद. हाँ, अब Science जरूरी भी. है. मैं अब साइंस जरूरी है. Physics and maths. I can't qualify. एक समय में नहीं होता था, मेरे टाइम पे हो गया था, लेकिन अब सच में ज़रूरी है क्योंकि जो machines जो flying है very advanced machines. Advanced machine. Makes sense. Yeah, you were saying something. Sir, I would like to ask one question. Looking back at your journey 10-15 years back, anything you would have done differently? किसी चीज़ का पछतावा है लाइफ में? कोई ऐसी एक चीज़ जो सोचा कि इसको मैं और बेहतर, या शायद मैं ये ना करता, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी चीज़? यार ये चीज़ें ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो अच्छी हैं, बट योर लाइफ इज़ नॉट इन योर हैंड्स लाइक दिस. Exactly. सिचुएशंस हैपन विद एवरीवन, सो एनीबडी सेज तो वो कहने की बातें होती हैं. हाँ, आई वुड हैव लव टू बी बोर्न इन अ Ambani family. Doesn't matter. I totally understand. That doesn't make any sense. Right. What happened has happened. Okay. And it was whatever I am or what I am not is all because of what has happened. So we just need to learn from those things and continue. Okay. You can't control And it. which body part is your like favorite? Low body, legs. Lower body, legs. Legs. Okay. Calves So what is your routine before the lower body workout? Nothing. A bit of warm up here and there. A bit of dynamic warm up I do Okay. for my lower body. Okay. Start with slightly lighter. I've skipped a lot of exercises. Okay. I have this problem of back spasms. बहुत major issue है. अच्छा. I've been hospitalized 3-4 times now because of back spasms. Oh. So MRI में कुछ नहीं आता, मुझे पता कुछ नहीं है. But I have a genetic issue. मेरी mom, dad दोनों के side से almost all relatives get this sudden spasm sitting somewhere. Okay. And it's very painful. I mean painful to an extent they're almost bedridden for next. अब मेरे साथ वो trigger कब आता है when I'm restless. जब मेरी नींद पूरी नहीं हो रही 2-3 दिन तक. Stressed and Yeah, lack of sleep. इस type का stress. हाँ हाँ. तो फिर now and with age what happens is these things will multiply if you don't focus. तो you have to keep your ego aside and be sensible. Exactly. Lifting में भी you have to be थोड़ा सा sensible है. पहले I was lifting extremely heavy weights. अब थोड़ा सा cut down on heavy. I only lift heavy. मुझे light से workout नहीं होता.
ठीक है, I lift heavy but comparatively not what I used to. Okay. I have cut down exercises irrespective what some stupid people have in mind कि ये इसके बिना Ego ऐसा lifting and all that. Deadlift I don't do. Okay. Barbell squats I really don't do now. See, much. even I don't do. Yeah, and it makes no difference. It's a great exercise. It is actually it's- great, but you're not, until unless I think you're not competing to that extreme level, there is no need. You can skip and you can I mean, go for isolation for me, if it's movements. hurting me, then it's not for me. Yeah. Do you have any specific workout split you would like to recommend to the youth? No? Also, I've made a very detailed video on all these topics. Yeah. So if you actually do all the research and all, it doesn't make any difference. No. All the workout splits are same. I can follow anything Anything. if I want good results. So, are you a fan of creatine for men, women, both? Yeah, Most creatine tested is supplement. it's one of the most researched supplements ever. So do you अब think जो निकल के आ रही रिसर्च वो और ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन वो पहले से ही था. क्योंकि साइंस इवॉल्व होती रहती है, वो मैं कहती हूँ तुमसे. I feel like साइंस कीप ऑन इवॉल्विंग. science. Sir, okay. I will. Okay. Yeah. First I'll talk about creatine and then I'll say what she was saying. Okay. Then you might agree with me on that. Okay. So creatine, right? So creatine, I feel like, it might be possible that I'm wrong, but what I feel like, what I've heard is that it creates water retention, right? No, it doesn't. No? And if you take that, your face will be bloated, stomach will be bloated. No. So these are all myths. Myths. Which again, that's when social media is full of myths. Creatine does not create. What water retention is created by creatine is called localized water retention. That's in your muscles. Right. That's how creatine actually works. It draws water into your muscles and give you that volumizing effect. Volumize, right. पेट में पानी नहीं होता, मुंह पे नहीं होता. If somebody is saying कि मेरा पेट बढ़ गया because of creatine, no, भाई साहब आप मोटे हैं. Not possible. That's how. I Yeah, like because We're just there are a blaming lot of my creatine. friends who I saw taking creatine and then I saw कि यार उनका face थोड़ा सा ऐसा सा है. No? Sir, are you in a favor of drinking energy drinks before a workout like Red Bull or Monster? जैसे आजकल If you're drinking one in a day, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेली पी सकते हैं. या देखो Yeah. जबरदस्ती डाउन करना है, हाँ मैं कर सकता हूँ, नहीं ये कर देगा, समझ गई वो मैं. कर देगा. आई नहीं, मीन नहीं. इट्स हाँ थोड़ा सा बस ये देख लेना, उनमें कैफीन इन जनरली इन सबके अंदर 80 से 100 mg होता है. इससे ऊपर रेयरली होता है. 80-100 mg मतलब स्ट्रॉन्ग कप ऑफ ब्लैक कॉफी. तो कैफीन पार्ट इज नॉट एन इशू. ओके. बाकी टॉरिन वगैरह सब चीज़ें दैट्स ऑल्सो हेल्दी. What about pre-workouts? ओनली प्रॉब्लम इज शुगर. तो अगर कहीं शुगर energy- इंटेक इज रियली हाई. हाँ, तो अगर किसी एनर्जी ड्रिंक में चेक कर लो, आजकल शुगर फ्री एनर्जी ड्रिंक्स भी तो आ रही है. अगर एक ही पीनी है और तुम्हें टेस्टी लगता है और कोई फर्क नहीं पड़ता. एक और क्वेश्चन है क्योंकि आपने शुगर बोला है. आर यू इन फेवर ऑफ कंज्यूमिंग शुगर? या आई एम ओके विद शुगर. यू ओके विद शुगर? Anybody who's saying I'm not anybody who's taking आई डोंट टेक शुगर. मैं कभी कभी खांड ले लेती हूँ, मैं इसलिए oh, पूछ that's the रही same हूँ. thing. So I'll tell you the biggest. This is also a YouTube myth. हाँ. Firstly, we need to understand what is research, what is nutrition and what is sugar के ऊपर जो चल रही है. So अभी एक नया ट्रेंड चला हुआ था वीडियोस का. I skipped sugar for 30 days. See what happened. एग्जैक्टली. फिर दूसरी वीडियो आई, अच्छा व्यूज आ गए. I skipped sugar for 15 days. See what happened. Let me tell you, nothing happened. Only views came, and they made a fool out of people. Sugar recommendations are there very clearly on all nutrition websites, all major nutrition bodies of the world, and all government websites. ओके. Okay, same is for salt recommendations. ओके. You are not getting harmed in any way if you're taking any type of sugar. You want to replace your refined sugar with khand or honey, Or no jaggery, problems. huh. It's great. Even I left sugar for like good 4-5 months. So it will make no wo because see, I don't like that white sugar का टेस्ट. मुझे हनी का टेस्ट ज़्यादा पसंद है. अच्छा. मुझे कईयों में स्टीविया पसंद है, जीरो वो है. लेकिन 2 teaspoons ऑफ शुगर अगर मैं किसी में ऐड करता हूँ, वो मैं 2 teaspoon खांड ऐड करूँ, जैगरी ऐड करूँ, हनी ऐड करूँ, वो मुश्किल से 50 कैलोरी टोटल बनती है. अच्छा. और आपके ब्लड शुगर को वर्चुअली सारी चीज़ें सिमिलर स्पाइक करेंगी, और वो भी बहुत छोटे समय के लिए. ओके. देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन फॉर समबडी टू स्किप शुगर. बिल्कुल टोटली लाइक क्रेजी जैसे लोगों को लगता है. आजकल शुगर का ऐसा हो गया ना कि इफ यू विल टेक लॉट ऑफ शुगर तो फिर एंटी एजिंग, एज जल्दी हो जाओगे. नहीं, that's right. ये भी होता है. बिल्कुल ये क्योंकि चीज़ें एकदम बिल्कुल spike होती हो हैं. जाएगा तो. ये बिल्कुल सही है. अच्छा. इफ यू आर हैविंग शुगर इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन. बट क्वेश्चन आता है, व्हेन आई से दिस लाइन टू मच ऑफ शुगर, प्लीज डिफाइन टू मच ऑफ शुगर. 2 teaspoons या 2 से 3 चम्मच चीनी तुमने ले ली, दैट इज नॉट टू मच ऑफ शुगर. वो नॉर्मल इनटेक है. ठीक है. टू मच का मतलब होता है, एग्जाम्पल, मैंने एक कैन कोक का ले लिया, 9 से 10 टीस्पून चीनी है उस एक कैन में. दैट इज लाइक तुम्हें पता नहीं है तुम क्या पी रहे हो, लेकिन तुम्हें जैसे तुमने पिया तब बॉडी को पता है इतने सारे चीनी एक साथ आ गई. ये हिडन सोर्सेज जो होते हैं ये डेंजरस है. अदरवाइज एवरीथिंग विच गोज इनटू योर बॉडी, सारे कार्ब्स अल्टीमेटली ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होंगे ना.
So skipping कुछ देखो, there is something called pleasure of life. Your skin will glow, your hair will be better, your health will be better if you start enjoying what you're doing rather than being so constructive. Lovely. Tell me one thing, what will happen if you have a piece of chocolate in the night? ये जो इनको craving हो रही होती है ना, I tell them to eat. As a female, when I undergo एक simple menstruation, तो Yeah. मुझे मेरा मन करता है to Yeah. have the dark chocolate. मैं खाती हूँ. उस केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लोगों की? उनको इतना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि क्रेविंग्स और बढ़ती हैं. आई ऑलवेज टेल पीपल, व्हाई डोंट यू हैव 2 pieces? अपने आप शांत हो जाएगी क्रेविंग. रिलैक्स योरसेल्फ, कुछ नहीं हो रहा है. डराना, फियर गेट्स यू व्यूज. क्या लाइन बोली सर, ये ठीक बिल्कुल है, सही बोला. फियर गेट्स यू व्यूज. द मोर फियर यू क्रिएट इन माइंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, द मोर यू प्ले ऑन देयर इनसिक्योरिटीज. इनसिक्योरिटी किस चीज में? इंडियंस में सबसे ज्यादा किस में है? वेट लॉस, हाइट, ठीक है, हेयर लॉस, देन यू कॉल ब्रेस्ट साइज, आज भी penis size. एक और है कि लड़कियां गोरी ही होनी चाहिए. आप ऐसा नहीं, एक ये भी एक कॉन्सेप्ट है. कल्चरल प्रॉब्लम्स. Are these insecurities just here or even outside, of course? But not that कुछ much. I think. कंट्रीज में है, इंडिया में बहुत ज्यादा है. India बहुत बहुत ज़्यादा. ज्यादा. Makes sense. सर एक आपका मैंने अभी रिसेंटली आई ऑल्सो चेक्ड योर इंस्टाग्राम, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बोल्ड क्वेश्चन. डज टेररिज्म हैज अ रिलीजन? Yeah, it has a religion. Of course. Yes, it has a religion. I saw the reel. 90%, So you- 95% of the terrorism in the world is Islamic terrorism. Yes. और मैंने उसमें ये भी बड़ी क्लियर चीज़ बोली थी कि फॉर एग्जांपल ये टेररिज्म हिंदू टेररिज्म होता, हाँ. तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन हिंदू होते? होते. मैं तो भाई खुद- मैं खुद हिंदू जब हूँ. इस्लामिक टेररिज्म है तो जो बेचारे नहीं करना चाहते मुस्लिम्स, वो और बदनाम होते हैं. और गाली खाते हैं वो. तो आई हैव हैड, फौज में मेरे इतने सारे कोर्समेट्स हैं, वो फाइटिंग ऑन द फ्रंट लाइन, दे ऑल मुस्लिम्स. वो कितने परेशान हैं कि इन बेवकूफ़ों की वजह से जो एक्चुअल रिलीजन वो खराब हो रहा है. द ये परसेप्शन ऑफ थिंग्स. Right. इट एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट. फाइट कैसे करोगे, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो. Sir, what about body mechanics? So body mechanics was my first project when I started gym. Okay. जब मैंने gyms की इंडस्ट्री में एंटर किया था, Yeah. that was among the first project I started. Right. फिर अराउंड 2020 if you remember, दिल्ली में बहुत इश्यूज आने लगे थे. बीच में वो सीलिंग शुरू हो गई, फिर कोविड आ गया. तो फिर there was a time when I thought कि यार इस इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने में टेक मी अ लॉन्ग टाइम. सो बेटर आई टेक अ स्टेप बैक एंड फोकस ऑन माई बिजनेस. ठीक है, एंड आई टुक एन एग्जिट फ्रॉम बॉडी मैकेनिक्स. 5 साल हो गए. 5 साल हो गए. आई स्टिल गो देयर, वर्कआउट करता हूँ, शूट्स होते हैं, Yeah. बट आई एम नॉट डायरेक्टली इन द बिजनेस. In the business yet. Sir, we have a very fun rapid fire round. Sure. So let's go with that. Just one. I think there are 15 questions. Okay. And just one word, or they're a little controversial. Okay, you can answer if you don't want to. Okay. That works. Sure. Sir will bang on, I know. Are you ready, sir? Yeah, I'm ready. Yes. Let's start. Harder to survive, NDA training or emotional pain in civilian life? Both. Anyone? Choose both. 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 Ever felt I like cannot define pain. No, I cannot say what type of pain you're going through. So you ever felt like quitting the Air Force at any point? I did quit when I felt like. Yeah. And what was the reason, if I may ask? So I said na, it was a shoulder surgery. जब So when I after that finished. you- After that मुझे पता था to get back in active flying it will take me a long time. Long time. So I'll better follow my second passion and start my second innings Second as early as innings. possible. Makes sense, sir. Sir, one word for NDA Ragda sessions. It's Rajda. Beyond ragda ही होता है, beyond Ragda. comprehension for most people. It's difficult to define. What you think or you have seen in movies or you can imagine, it's 10 to 20%. Can you tell the audience what is Ragda session? So when you people talk about ragging and all these things, these are childish things. They don't happen in India. India don't do stupid things with you. They make men out of boys. And to make men out of boys, you have to push them beyond physical limits. Physical limits is not training. Training is just one part. What happens after training, when the lights out happens, when when nobody is looking at you unofficially, that's what makes you a man. That's ragda. Ragda can be of hundreds of types. Do you have any examples? Give me 2 or 3. कुछ भी हो सकता है. अब let's say, let me give you a very simple example. It's 45 degrees Celsius outside. I tell you, remove your shoes, okay? Or forget about shoes, normal. Just be in a push-up position. What will happen to your hands? In 45 degree burning road. Just in not even push-ups, just be in the position. Or I'll tell you, okay, remove your clothes, start rolling on the road. What will happen? This happens. This is, I said, na, these are very basic things. There's much Tell more. me something deadly. Sorry? Something deadly or more Something scary. very ruthless.
Not a good thing because there are parents watching. Their kids are there in India. So that's why वो या देखो रूथलेस इसलिए होता है क्योंकि वो थोड़ी अनऑफिशियल चीज़ें हैं. अच्छा वहाँ पे ऐसा नहीं होता कोई मार रहा तुम्हें, ऐसा भी नहीं है. They don't hit you. That's not there in India. वो बहुत पहले होता था, डिकेड्स पहले, अब नहीं है. बट पनिशमेंट सेशंस जो हुए या कुछ भी होता है, ऑफिशियल पनिशमेंट्स भी होती हैं, EDs होती हैं, एंड व्हाट यू कॉल दैट, योर रिस्ट्रिक्शन रन्स होती हैं, वो होती हैं, वो अलग हैं. अनऑफिशियल चीज़ें बहुत होती है, तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें देते हैं, उनके सीनियर्स उनको देते थे. इट्स अ थिंग which continues. Patti parade, if you don't know, that's something which. What is Patti parade? So what is it? Okay, so Patti parade happens in very few squadrons. So I'm from Charlie. So I think Charlie in November were famous for Patti parade. And बाकी में होता भी नहीं था, हमारा ट्रेडिशन था. So Patti parade is like you're standing in front of a senior, and he'll give you some seconds, maybe a minute or something, to run and change into. And now let's say there is it's like a school building, समझ लो. Okay. And you're standing in one place. The squadrons ऐसे ही होते हैं. तो your room is somebody is in that corner, somebody is there, somebody is there, somebody. तो depending on वो कितना दूर है, उस हिसाब से उसको बोलते थे, okay, इतने मिनट change into this rig. Rig में that type of dress. We have multiple dresses. Okay. So you have to immediately change in the best way possible and be. And you have to sprint. So within वो कितना लंबा चलेगा nobody knows. Nobody knows. ठीक है. But that's वो जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, वो जो चीज़ परफॉर्म करनी होती है. So it's next level, sir. I get it. Your biggest regret while serving in IF? Something you not focusing a lot on academics, underestimating academics. Anybody who thinks फौज में studies नहीं है, please don't get into फौज. है Massive studies हैं. massive studies. बहुत studies हैं. Wow. अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है. पहले तो फिर भी it was अब तो with the latest technology coming in, they want engineers now. They want those minds now. There is no काम चला होती. If you think पर वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, please don't enter फौज. There's a lot of studies. Makes sense. Fitness or flying? Your real obsession? Fitness. Fitness. Okay. Torn shoulder or betrayal in business? Which hurts more? Betrayal in business. Betrayal in business. One supplement for your own brand you swear by? One supplement नहीं, क्योंकि everybody is for different needs, no? But any one supplement Like you I swear take by, myself, I'll tell you what I always take is my favorite ones are Super Greens Okay. and Multi-Collagen. So I mix Multi-Collagen and two of Super them, Greens. almost have every day. Okay. And even ever doubted your own product's effectiveness? Yes or no? Yes, we do. That's how you improve on the product. Exactly. Lovely. If somebody says no, he's lying. How can you say that? Yeah, we have to improve, we have to work. किसी पे नहीं काम करा, complaints आ रही हैं, किसी को adverse reaction भी आता है. This is how things are. This is how things goes. Okay. Where's it? Yes. Which of your brands is the most misunderstood? We Are Stupid, Mango Herbs, Body Mechanics is gone now. Natural Teen or Cafe Tea? All of them for some people, none for most people. What a smart answer, sir. Great. Person to person perception. Great. Can't Yeah. change. Yeah. What is more addictive, caffeine or applause from fans? Applause from fans. Applause from fans. Okay. Your most toxic habit you had learned to unlearn post IF? Whatever I've unlearned was there in Poj only. They make you unlearn. Like? So let's say toxic habit, but a lot of habits change post that, because we had a habit of waking up early in the morning, working according to, and working in a way of a job. After I quit IEF, it was all business. So I was totally on my own. I had to learn that new way of life, new way of taking things, understanding the civil life, people's mindset, which is way too corrupted than what you see in Forge. So that was the challenge. Sir, one thing about NDA training that people will never believe. Toughness. Toughness? People cannot comprehend. They cannot imagine what happens. It's like, what happens in NDA or any such institute, it's only something which can experience. Any small reference you'd like to give? I mean, so everything, right? NDA में, right from your drill sessions to your, I'll give you the wildest of the example. आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है. So NDA is a huge place. NDA is close to 7,000 acres of land. Okay. NDA में ऐसा नहीं होता है कि you have, अच्छा ये बास्केटबॉल कोर्ट है, 2 ये स्विमिंग पूल है. NDA is like
32 basketball courts, 16 football fields, polo fields, 2 Olympic-sized swimming pools with diving boards, landing strips for flying, horse riding के लिए equestrian वो, I mean everything, you name it. There's an entire lake. My club was water skiing. So there's everything you can imagine in India. And you enjoy certain things. But then the structured part of NDA is itself so challenging that you really don't have time. ऐसे निकलते हैं 3 साल. Your day starts in the morning 3:34, ठीक है, depending on your seniority. And it ends you don't know when. You may sleep only for 1 hour, 2 hours. What kind of meals you got there in India? Meals are very good, but then initial years में आप खा नहीं सकते इतनी आराम से. That's also part of training. Like जैसे मैं सुबह उठा मुझे क्या मिलेगा? Okay, I'll give you an example. खा नहीं Yeah. सकते. Okay, I'll give you an example. I don't know if this continues now. I've not been to India from long time. Yeah. Okay. And also females have come in, so I don't know how the atmosphere is. Right. But in our times, like in my initial terms, so initial terms में you go crazy because उनको पता है to face those tougher terms, you have to go through it. So let's say you sit on a dinner table and you're always hungry in India. You lose weight like this. I lost 11 kgs in a month, in the first 1 month, despite of being an athlete. My God. This is how the training is. Yeah. Lot of physical activity. It's not physical यार, वो physical अलग ही level है. अच्छा. ठीक. तो I mean, let's say you're sitting. The moment you come into full-fledged training, क्या हम proper वो चल गया. तो उस time let's say आप तुम्हारा senior सामने बैठा है. डिनर प्लेट ओपन होती है, ऐसा नहीं है कि एनीबडी कैन गो, ऐसा नहीं. इट्स अ प्रॉपर परेड होती है, उसमें यू स्टैंड, 1 by 1 पीपल एंटर, सेट देयर इज अ वे टू ओपन द प्लेट, क्लोज द प्लेट, एवरीथिंग इज अ सिस्टमैटिक, यू लर्न स्लोली. लेट्स से यू ओपन द प्लेट, यू ओके द डिनर इज स्टार्टेड, यू कैन नॉट ईट ऐसे ही, देयर इज अ वे ऑफ ईटिंग, ठीक है. एंड इफ यू फ्लाउट यू विल स्टॉप द डिनर, यू गेट आउट, ठीक है. बट उसके अलावा भी जैसे कोई जूनियर है, उनको पता है इनको ज़्यादा वो नहीं देना, यू हैव टू मेक देम टफ, सो दे विल गिव यू लाइक 30 seconds टू ईट. Okay, 30 seconds. And in that particular way, you have to eat in a way. Okay, hurry up, finish your dinner. Open हुआ, you have 30 seconds. How much can you eat in 30 seconds or 1 minute? और मेरे को ऐसे ही खाना पड़ेगा आराम से जो तरीका होता है. मतलब I can't all gulp in 30 seconds. Proper जैसे खा रहे हैं, chew करके. Wow. So you don't eat. So then you keep थोड़ा सा खाना वाना अपने ट्रंक्स में. तो कहीं मिल जाए भूख लगे रात को सोने के बाद, जब सब सो जाते हैं तो थोड़ा सा खा लो. थोड़ा सा खा लिया आपने. All part of training. Marrying late or sacrificing social life, your biggest personal trade-off? I don't care about social life. Marrying late was also not a decision. I mean, it was a personal decision. So both the things are fine with me. I mean, Fine. I did not marry very late, but I had to at least settle in a particular way. Of course. You know, as I said, being a first generation and everything, it takes time. Takes you have time. to sacrifice a lot. Of course, sir. Marriage is one thing, right? Same is with my wife. She's also first generation lawyer. But social life, I don't care. I'm not a party person. No? I'm No not a club alcohol, person. No, I don't drink. I don't No smoke. smoke, nothing. Great, sir. Most overrated fitness rule you have publicly broken? ये तो सारी myths एक साथ ही आ गई. The most interesting one. Anyone which is on the height, like most Yeah, highlighted? height is also one. बहुत सारे हैं वैसे तो, but height, you know, लटकने से हाइट बढ़ती है. Height बढ़ती है. ठीक है, बास्केटबॉल खेलने से हाइट बढ़ती है, सोने से हाइट बढ़ जाएगी, क्या है, और देयर लॉट ऑफ स्टूपिड थिंग. एक वो भी था, वो मेडिटेशन से हाइट बढ़ जाती है, एक somehow there's some weird meditation से हाइट बढ़ती है. Lot of crap. Okay. Are you still chasing something you haven't caught yet? Yes or Hundreds no? of things. Huh? Hundreds of things. Hundreds of things. Okay. That's it. So this was your rapid fire round. Thank you. And we come towards an end. And congratulations, first of all. I would really love to try your brand. Thank you. All the best for that. Thank And guys, we will put the links in the bio. If you want to buy anything from Mango Herbal and natural herbs. mango herbs and natural tile Natural tea. or natural tea. Yeah. Tile. Natural teen. Teen. So proteins are Natural teen, teen. Yes. and natural. Natural tea. Natural teen. Yes. And cafe. Mango herbs. Cafe tea. Cafe tea, natural tea, mango herbs. Mango herbs. And of course, we are stupid, Yeah. those ongoing. All right, sir. Thank you so much for coming.